साई ब्रो, वेलकम ऑन स्ट्रीम। क्या हालचाल, कैसे हैं आप? वॉच पार्टी में आप सभी का स्वागत है। अभी इसको पॉज करते हैं पहले। साई ब्रो, वेलकम ऑन स्ट्रीम। आज देखते हैं यार, वॉरजोन की एकदम रिलीज़ देखेंगे लाइव आप सभी के साथ में। एक्साइटेड हो आप सब? तो पंखा चालू किया जाए पहले। अरे साई ब्रो, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? आप बताओ, आप कैसे हो? गेम का साउंड चलो ठीक है। अभी लाइव देखेंगे हम लोग, वॉच पार्टी करते हैं। वॉरजोन मोबाइल का लाइव गेम प्ले देखते हैं, पूरा इवेंट आज वॉच करते हैं, डिस्कस करेंगे, इवेंट भी देखेंगे, साथ में बातें भी करेंगे। और साई ब्रो बताओ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? अभी 23 मिनट्स बचे हुए हैं। ट्वेंटी मिनट्स लेफ्ट। कब लॉन्च होगा वॉरजोन मोबाइल ब्रो? अभी वॉरजोन मोबाइल लॉन्च होने में तो अभी टाइम है। वॉरजोन मोबाइल आपका लॉन्च होगा 2 से 3 मंथ में, और अभी इस इवेंट में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा हमको। ग्लोबल रिलीज़ कब है, कब कैसे क्या होने वाला, सब कुछ इस इवेंट में हमको मालूम पड़ने वाला है। तो एक्साइटेड हो जाओ सब और रेडी हो जाओ। कल जैसे हमने फेस रिवील किया था, वैसे आज वॉच पार्टी करते हैं आप सबके साथ। अरे वॉरजोन मोबाइल दीप भाई, वेलकम ऑन स्ट्रीम। की हालचाल, कैसे हैं आप? क्या करते हैं अपन, इधर बैकग्राउंड में लगाते हैं अपना कोडेम का गेम प्ले लगाते हैं बैकग्राउंड में, जब तक वहाँ चालू होता है। 23 मिनट्स हैं एकदम। कोडेम का कुछ गेम प्ले लगा देते हैं यहाँ पे। प्लेलिस्ट, चलो प्लेलिस्ट को छोड़ो, वीडियोस में जाते हैं। हाय ब्रो, अरे हाय ब्रो दीप भाई, क्या हालचाल? कुछ एक बढ़िया बढ़िया अपने पुराने कोडेम के गेम प्ले लगाते हैं जब तक गेम चालू होता है। COD मोबाइल विथ इंदौरी वाईटी, और बातचीत भी करते हैं। गेम प्ले दिखाएंगे क्या वॉरजोन? हाँ ब्रो, वॉरजोन का गेम प्ले भी दिखाएं। देखो आपको सबसे अच्छा एक क्लच दिखाता हूँ, जब मैं COD मोबाइल खेलता था तब का एक क्लच दिखाता हूँ आपको। 1v4 किया था मैंने, ये देखो आप। जब तक उधर वॉच पार्टी अपनी चालू होती है, 20 मिनट्स में वहाँ चालू हो जाएगा। क्या करा? भगाओ भगाओ। अरे रोका क्यों यार? 1v4 यहाँ पे किया था मैंने जब COD मोबाइल में खेलता था। ये पहले को मारा, यहाँ पे दूसरे को मारा था मैंने, फिर एक और स्लाइड करके तीसरे को मारा, और एक बंदा पीछे था चौथा, फिर चौथे बंदे को मारा। ऐसे करके 1v4 किया था मैंने। तो ऐसे कैसे 1v4 हम करने वाले हैं वॉरजोन मोबाइल में। पहले तू लाइव बढ़ा। अरे बड़ा गेम प्ले दिखाएंगे क्या वॉरजोन? हाँ ब्रो, गेम प्ले भी दिखाएंगे वॉरजोन। और शेयर कर दो यार, स्ट्रीम अपनी शेयर करो, ताकि और भी बंदे हमारे साथ जुड़े। आपको ये दिखाते, एक स्नाइपर शॉट दिखाते हैं प्लेटफॉर्म। ये देखो स्नाइपर शॉट एक बढ़िया क्लोज में मारा था। भी आइसोलेटेड में फुल क्वालिटी में क्यों नहीं चलता है ये? चलो ठीक है फिर भी। अरे यार, अरे अमन, तुम मेरी स्ट्रीम पर लाइव हो, तुम मेरी स्ट्रीम पर लाइव। अरे अमन ब्रो, वेलकम ऑन स्ट्रीम। की हालचाल? अरे क्या बात है, वाला शॉट मार दिया मैंने। तुम स्ट्रीम पे पीछे करके देखना, मजा आया। COD का अपना इवेंट आज देख रहे हैं अमन ब्रो, तो तब तक इवेंट चालू होने में भी टाइम है। तो मैं पुराने वीडियोस देख रहा हूँ मेरे COD के। नो चांस अगेंस्ट पावरफुल डुओ, तो ये वीडियो ठीक था। M13 सीजन 9 बेस्ट गनस्मिथ, एक मल्टीप्लेयर का निकालते हैं। बेस्ट गनस्मिथ ये लगाते हैं। क्या हालचाल अमन भाई, कैसे हो बताओ? राइट, मेरा भी स्ट्रीम देख लो। आवाज़ नहीं आ रही। रुको, आपका भी स्ट्रीम देखते हैं। ये देखो बहुत पुराना गेम प्ले, जब COD मोबाइल खेला करते थे। कौन सी गन ली है मैंने? क्या दिन थे यार ये भी। ऐसे कैसे FPV में खेलेंगे वॉरजोन मोबाइल? अरे रुको रुको यार, थोड़ा सेट कर मैं अपना सिस्टम। ये तो बोर्ड थे, दोनों बोर्ड थे। चलो चलो हो गया। अभी हमारे और दोस्त लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। और लाइक करते जाना यार, लाइक का आज टारगेट ही नहीं रख पाए हम लोग। क्या हो रहा है? चल रहा तो पूरा हिल रहा, मतलब इसीलिए हटाया। वसीम भाई ये स्नाइपर 432 सब्सक्राइबर कंप्लीट यार। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया सबको थैंक यू। और कमेंट वगैरह करते तो लगा इनका डायरेक्ट इवेंट लगाते हैं, वहीं पे बात करते हैं इवेंट की। ये वीडियोस तो चलते रहेंगे।
अरे यार shit। आज सब लोग गया वॉरजोन बंदा, का निकल मोबाइल। गया, अपनी कार लाओ। हाँ गए चलो हो बंदे गया जो चालू, थे, रुको वो तो निकल करते हैं गए। लोग को। कॉल ऑफ ड्यूटी कहाँ गया? कॉल हो गया है चालू लगभग। इवेंट ही लगाते हैं ना। कहाँ चले गया? चलो 18 मिनट लेफ्ट है अभी तो फिलहाल। 18 मिनट बचे हुए हैं अभी। 17 मिनट जल्द ही चालू होने वाला इवेंट। कोलैब करें, कोलैब राइट। मेरा भी स्ट्रीम देख लो अमन ब्रो। रुको मैं आपके उसमें जाता हूँ ना, 1 सेकेंड रुकना। अपनी स्ट्रीम अपन ही चला सकते हैं क्या? अपनी डायरेक्ट यहीं से चला सकते हैं क्या? चैनल पे जाते हैं डायरेक्ट यहीं से। अमन भाई, अरे यार मैंने तो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया था। चलो अमन का चैनल ही नहीं मिल पा रहा था मेरे को। चैनल पे जाते हैं। अरे क्या बात है अमन, अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया था। ओ भाई अरे अमन भाई, अमन का चैनल ही नहीं मिल पा रहा था मेरे को। क्या हालचाल अमन ब्रो? एकदम आपको देख रहे हो लाइव। क्या बात है अमन? ओ भाई क्या बात है? गेमिंग चेयर वगैरह सब कंप्लीट। क्या बात है? सेटअप फुल ओपी सेटअप देख रहे हो लाइव। अरे गेमिंग चेयर वगैरह क्या हालचाल? क्या बात है? सेटअप फुल सेटअप यार। देख रहे हो लाइव। चलो अमन हमको देख रहे, हम उनको देख रहे। अब क्या देखेंगे? क्या बात है? सेटअप फुल सेटअप। अरे ये लोग 18 मिनट खा गए यार, 30 मिनट खा गए साहब। अमन हमको देख रहे, हम उनको देख रहे। अब क्या देखेंगे? कोलैब करे। अरे क्या बात है? अरे ये लोग 18 मिनट खा गए यार, 30 मिनट खा गए साहब। अमन हमको देख रहे, हम उनको देख रहे। अब क्या देखेंगे? कोलैब करे। अरे क्या बात है? ये लोग 18 मिनट खा गए यार, 30 मिनट खा गए साहब। अमन हमको देख रहे, हम उनको देख रहे। अब क्या देखेंगे? कोलैब करे। फुल वॉरज़ोन ग्राइंड करने वाले हैं सब लोग लग रहा है। अच्छा जो भी स्ट्रीम बनाने वाला लाइक कर देना और सब्सक्राइब करे बिना तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। फुल वॉरज़ोन ग्राइंड करने वाले हैं सब लोग लग रहा है। दबा के एकदम खतरनाक। बनाने वाला लाइक कर देना और सब्सक्राइब करे बिना तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। फुल क्या बात ग्राइंड करने वाले हैं सब लोग लग रहा है। दबा के एकदम खतरनाक। बनाने वाला लाइक कर देना और सब्सक्राइब करे बिना तो लाइक तो करना ही पड़ेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी निकालते हैं। चलो अमन भाई बढ़िया। पीस और इनको भी बुलाते हैं सबको। पीस को मैसेज करता हूँ क्या कर रहा है। पीस को मैसेज कर देते हैं। ये स्ट्राइक वगैरह तो नहीं मिल जाएगी? मालूम पड़ा यार, वाट नहीं लग जाए। वॉरज़ोन वॉच। यार पहले से डिसाइड कर लेते हम लोग, टर्निप वगैरह पे ज्वाइन हो जाते, मज़ा आती। और राहुल ब्रो वेलकम ऑन स्ट्रीम। की हाल चाल, कैसे हैं आप? हाँ क्या बोल रहे हैं लोग? I'm not excited for. I think honestly being able to see a lot of people who played online together finally in the same area after everything that's gone on and being able to get back together, like that's going to be a really fun time for people to be able to like see each other across the way. Now there's a lot happening. There's a lot being revealed. You guys are getting that inside scoop on it. iFerg वगैरह भी सब आएंगे यार। Multiplayer, so much Gameplay going on. live What is खेलेंगे। your game? What is your game on cards? You know, what are you looking forward to? So I'm a huge multiplayer search and destroy fan. So a little अच्छा, bit SND different के than most fan। people here. They play mainly Warzone. Not that great at Warzone, but search and destroy, quick skipping, that's my thing. Okay, we love to hear that. And what about you? Also, search and destroy. That's how we met. Wow, So hardcore. yeah, search and destroy SND। all day. हम तो यहाँ वॉरज़ोन के लिए बैठे हैं। BR बेटर रॉयल ओनली। सॉन्ग का कॉपीराइट वगैरह नहीं पड़ जाए, बस वही चिंता है। स्ट्रीम देखने के बाद तुरंत डिलीट करना पड़ेगी लग रहा है, वॉच पार्टी के बाद। क्या करें, टर्निप पे ज्वाइन हो जाए क्या अमन?
अमन अगर स्ट्रीम जल्दी वॉरजोन दिखा रहे अभी 13 मिनट लेफ्ट हैं। कोलैब करें अमन यार, एक काम करते हैं, वो टर्निप वाली आईडी अगर होगी जो पीस का सर्वर था उस पर कनेक्ट होते हैं तो हम सब बात भी कर पाएंगे साथ में। ऐसा करें क्या? टर्निप पे ज्वाइन हो जाएंगे सब लोग। ट्वेल्व मिनट लेफ्ट, पूरा करते हैं तो कैसे दिख रहा है? ठीक है, ये भी स्ट्रीम मत ऑफ करना। हाँ, स्ट्रीम ऑफ नहीं करेंगे, स्ट्रीम ऑफ नहीं करेंगे, स्ट्रीम तो चलता रहेगा। मैं सोच रहा हूँ टर्निप ज्वाइन कर लें हम सब, कुछ बातें भी होती रहेगी। रुको, मैं पहले बात करता हूँ। एक सेकंड रुकना। करते हैं टर्निप भेजते हैं, जो आना चाहेगा सब ज्वाइन कर लेंगे। See them, be able to refine it, come in with Ricochet this time, not have any of the issues we did with Verdansk, and really be able to, just hit the ground running this time. As we look ahead पता नहीं यार क्या हो रहा था, स्ट्रीम ऑफ हो गई थी, अभी साउंड वगैरह सब कुछ हो गया वापस। आपको क्या लगता है जितनी हाई पे उतनी अच्छी होगी क्या गेम? अरे बहुत शानदार गेम होगी, चिंता मत करो। 7 days straight, and we covered the whole thing, from the Easter eggs and all the things that told us what was going to happen, to seeing the nuke actually explode. And I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I had been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was just euphoric for me. Well, I can't wait to see your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. फेस कैम हो गया ऑन है ना? चलो हम सब साथ में देखेंगे पूरी स्ट्रीम। 9 मिनट लेफ्ट। देखो क्या क्या होता है। मॉडर्न वॉरफेयर 2 बताने वाले हैं ये, मल्टीप्लेयर, स्टोरी मोड और वॉरजोन मोबाइल, ये 3 गेम का गेम प्ले टीज़र वगैरह सब दिखाएंगे ये लोग। और अपने हाइफर्क हो गया, गोर्जली हो गया, नोआ फ्रॉम वाईटी, ये लोग शायद इवेंट में गेम को लाइव खेलेंगे भी, वॉरजोन को। हो गया चालू, हो गया। चलो चलो धीरे धीरे सब बंदे, अपने दोस्त लोग सब जुड़ेंगे अपने से। चलो यार, वॉरजोन ग्लोबल से पहले हमारे 500 सब्सक्राइबर होंगे या नहीं होंगे, एक उसी की रेस करते हैं। 500 सब्सक्राइबर हो जाए हमारे ग्लोबल आने से पहले वॉरजोन, तो थोड़ा कम्युनिटी टैब अनलॉक हो जाएगा हमारा। यार अमन भाई का चैनल, अमन को मैसेज करता हूँ, अगर किसी तरीके से हम कनेक्ट हो जाएंगे तो बातचीत भी हो पाएगी, वो ज़्यादा सही रहेगा। Obviously, new iteration of the game. We're expecting so many different things coming out to play here. What do you expect out of this new game? What are you looking forward to?
I'm looking forward to the Call of Duty polished feel you expect, especially from Infinity Ward. I think that was my favorite part of Modern Warfare 2019. Was just how smooth everything felt. I love the field upgrades. I'm wondering if they potentially added any more. And at the end of the day, they've already teased earlier today the brand new Gunsmith 2.0. I want to see what type of crazy weapons they come up with. I cannot wait to just lay the smackdown on all the Call of Duty League pros that are here. They're all absolute noobs. I'm looking forward to today. ये सब जो दिखा रहे हैं ना ये यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। तो एक काम करता हूँ, नोटिफिकेशन नहीं गया यार अपने भी सब्सक्राइबर्स को। चलो 6 मिनट लेफ्ट, 6 मिनट बाकी केवल। भैया सब ने मेरे को मैसेज कर दिए हैं। हेलो ब्रदर, क्या हालचाल, कैसे आप? सेडी पूल वाईटी, वेलकम ऑन स्ट्रीम। इंजेक्टर एपेक्स को मिला धोखा। अरे इंजेक्टर ब्रो, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। Really good, man. I mean, MW2, the name itself has so much hype around it, and it's just so exciting to play a game. Infinity Ward is my favorite company to make the game, so I'm के super कंटेंट क्रिएटर है, बहुत शानदार है, खेलता है। How are you guys feeling? We've got Warzone 2.0. Our first event here, so I mean, we're really excited. फर्स्ट इवेंट, क्या बात। Okay. Anything you'd like to add? How are you feeling? I'm feeling good. I'm super excited. This is the first like Call of Duty event, like said, this is our first ever event, that I've been this is really new to us. Really exciting. I don't know what to expect, but I'm just ready to play. You know what I mean? Any favorite memories from the original Modern Warfare 2 that anyone wants to share? पोल डालना था। I remember the first nuke I ever got was on the map Estate, and I was hype. I was like 13 years old. Silence ACR going crazy. क्या बात है। बस 4 मिनट लेट दोस्तों, 4 मिनट में चालू होने वाला है, मजा आने वाली है। इंजेक्टर भाई कोई धोखा नहीं मिला यार, आज वॉरजोन आने वाला है तो वॉरजोन देख रहे हैं। Credible YT, welcome brother. What do you expect out of a good campaign? So if you're a campaign guy, what do you look for? I don't know. I just played it. The missions are fire, so I just want fire missions again. I ain't gonna lie. Wasn't that the one we had to crawl and be secretive or something like that too? I always love the sniper missions where you that's what I'm saying. Like, it was really dope. I love that. Well, I'll tell you what, I'm not going to waste any more time. Go enjoy it. Get on the sticks, and we'll catch up with you later to see how you feel about it. Thanks, guys. देखो बताना है पोल डाला कि नहीं। पोल डाल दिया है मैंने। क्या लिखा, मेरा 4 GB रैम है, मैं क्या करूँ। अरे 4 GB में भी चल जाएगा ब्रो इंजेक्टर, और कोशिश करो एक नया डिवाइस ले लो तो और अच्छा रहेगा। वॉरजोन साथ में मिलके खेलेंगे। और बताओ, आ गया पोल। अरे क्या बात है ना, आ गया ना पोल, अभी जस्ट ऐड किया मैंने। 3 मिनट लेफ्ट। पब्लिक Warzone open the chat. Warzone mobile open the chat. फेस कैम क्यों बंद हो जाता है यार, क्या समस्या है। आज फेस कैम साथ नहीं दे रहा है। रीस्टार्ट कर लेंगे फेस कैम की, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी दिक्कत होती है फेस गेम की। चलो, अरे ये भी तो प्रो प्लेयर है यार वॉरजोन का। I'm excited to see the map with Caldera. There was a lot of like elevation,
And I liked in Verdansk how it was like a lot of buildings. So I'm hoping to see a lot of like buildings for like building fights because I'm a close range player. So that's what I'm looking forward to. Warzone 2 भी आज रिवील होगा, Warzone 2. दो मिनट बचे हैं दोस्तों, मज़ा आने वाली है. फेस गेम यार, फेस गेम इसी टाइम पे बंद होना था. बताओ यार आप सब क्या देखने के लिए एक्साइटेड हो, मॉडर्न वॉरफेयर 2 या वॉरजोन मोबाइल? क्योंकि हम तो यहाँ वॉरजोन मोबाइल के लिए आए हुए हैं. और वॉरजोन 2 भी देखते हैं यार पीसी में किस तरीके से आ रहा है वॉरजोन 2, क्या क्या नई चीज़ें आ रही है. इसके मार्च साथ नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है. चलो कनेक्ट होते हुए फेस कैम वापस से. तो दूसरी आईडी से आता हूँ मैं. अपने अपने कमेंट करते रहो यार. यस, आ गया पोल, बढ़िया. चलो स्टार्ट होने वाला है. 24 सेकेंड, 22, 21, 20. क्या बात है चेड यार, देखो 2.5 लाख लोग देख रहे हैं यार लाइव, क्या बात है. अब सोच लो 30 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चलो स्टार्ट करते हैं. क्या बात है, ये बात. ओपन द चैट गाइस, मॉडर्न वॉरफेयर द फ्यूचर. और बिगिंस नाउ. और मैप भी दिखाएंगे नया. और क्या बात है 2.0 वॉरजोन. अरे पानी में बैटल हो रहा था. वॉरजोन मोबाइल, अरे वॉरजोन मोबाइल. अरे क्या बात है. गोस्ट, दिस इज ओनली द बिगनिंग. चैंपियन आ रहे हैं, ई स्पोर्ट वगैरह. जाओ कॉल ऑफ ड्यूटी नेक्स्ट. गेम इंस्टॉल करने कितना टाइम मिलेगा? ओपी. अरे अभी बस देखो इवेंट देखो शांति से, बढ़िया. और लाइक जरूर करते जाना, ये बात. I am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we share today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that.
And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 Warzone का जो beta क्लिप दिखाया था and to छोटा be था, थोड़े here ग्राफिक्स live in इतने अच्छे person with मजा more नहीं than आया। अब देखो अब जो 200 गेम of प्ले the दिखाएंगे ना biggest उसमें मजा streamers आएगा। and creators in all of gaming. अल्फा का They will फुटेज finally दिखाया get था, their hands on the 3 true लाख star व्यूअर of the की। show, the अरे ये लोग gameplay खेलने वाले हैं itself. यार, So let's क्या get बात right है, into इतने it. लोग लाइव खेलने It वाले is हैं। my esteemed pleasure to अरे गजब, introduce निंजा निंजा, alongside me Patrick क्या Kelly, बात है, co-studio निंजा head ओपी। of Infinity Ward and the executive creative श्राउड को director बुलाया of है Call क्या? of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so मुझे exciting to be भी here वो with all क्लिप of you. में नहीं पसंद आ It's गया। been such अरे a वो तो journey अभी to बहुत get to अर्ली this स्टेज place. का था। You अभी know, देखो अभी देखते हैं on the कैसा होता है franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by COD people, अब क्या है, what are Warzone the मोबाइल को areas भी you लाइव focused खेलने on वाले हैं। improving, or what are the areas you अरे innovated देव on? भाई वेलकम ऑन स्ट्रीम। We रिंग worked लाइट on देखो, improving and innovating on every area of the game. क्या बात है। It always comes back to gameplay. Gameplay is king. ये But मॉडर्न I could वॉरफेयर go on खेलेंगे and या on. फिर Things like third person. मल्टीप्लेयर Things like what खेलेंगे? we've innovated in the Warzone 2 space of battle royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player क्या counts बात है of यार। AI. सारे कंटेंट And it क्रिएटर goes आए हुए on हैं। and on and on. We've got mobile connected with progression. एक्साइटेड everything फॉर else Warzone। across अरे all क्या of बात the है games. तेजाज ब्रो, वेलकम It स्ट्रीम। just goes on and on. हो गया मास्टर, अरे क्या But बात you know है। what? It all comes सोलो back to क्यों one करके thing. ओपी है भाई। It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player or a casual player, whether you are somebody who likes to play with your friends or you like to play alone, wherever you play, be it on console or PC or mobile, however you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that and play that, and fun is what you come away with. Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat, a new gulag twist. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions. And I can't wait to see how these new ways to connect evolve. Bobby plays, ये बैठा है। Now, Pat, what can you tell us about weapons? Bobby plays. Wow. So we've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's before I even get into what we've done with the new gunsmithing and how you build your weapons and the platforms, etc. Look, इस वजह से नहीं कर रहा था and I hope you'll love it चलो like फुल we do. स्क्रीन करते हैं, समझेंगे बाद Well, में। we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the Full screen हो beginning गया। of Hello Modern Raul, Warfare hello। 2, and then shortly after that, Hello Warzone guys, open the 2.0, chat। and then very shortly ये after क्या that, for मोबाइल the का first time ever, चल रहा है we're ब्रो, going to अभी तो release इवेंट a चालू हुआ। raid in Call of Duty. It's a very सारे different गेम kind of प्लेस दिखाएंगे gameplay. अभी। It's very intense. साथ में We देखते think हैं, it's enjoy very करते हैं। fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning, which anyway, I won't go off on that, but we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. And believe me when I say, everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Thanks again and enjoy the show. बोल दो उनको भाई, अरे सही बात है तेजाज, चलो देखते हैं क्या बात है, थोड़ा देखते हैं फिर चैट करते हैं। We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. ड्रोन था। We've never seen activity on this scale. अरे They have an army, but we have each other. The world is a vampire.
कुछ दिख क्यों नहीं रहा यार, क्या हुआ? कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या बात है? हाँ अब दिखा। ये Warzone 2 का न्यू मैप लग रहा है शायद तक। हाँ और गजब, नाइस। अरे देखो पुल भी कर सकता हो आप आपके साथी को, जैसा पबजी में देखा होगा ना आपने, वो ऑप्शन भी ऐड कर रहे हैं शायद। अरे कैमरे भी लगा सकते हो आप Warzone 2 में। ओह अरे क्या, अरे गोस्ट को देखो FHJ लेके जा रहा है। अरे तेरी क्या, ओहो Warzone 2, ओ गजब। और Warzone 2 शिट, अरे न्यू में भी ये पूरा Warzone 2 का। कितनी सारी चीज़ें ऐड कर दिया। Warzone में पानी में तैर नहीं सकते थे, इसमें वो ऑप्शन भी रहेगा। अरे पानी में भी ग्रेनेड, गन्समिथ 2.0, क्या बात है। थर्ड पर्सन, अच्छा थर्ड पर्सन लिखा हुआ था ना। अल्टीमेट, लेकिन अपने Warzone मोबाइल का भी दिखाना चाहिए गेम प्ले। मॉडर्न वॉरफेयर, अच्छा प्री ऑर्डर नाउ। And get early access to the open beta. Warzone 2 का भी दिखाया ना इन्होंने, ग्लिम्स वगैरह दिखाया Warzone 2 का। We got intel reports. Hassan. We've never seen activity on this फिर से field. वही चालू हो गया। कैसा लगा तेजाज ब्रो, कैसा लगा ट्रेलर थेनोस भाई जो दिखाया इन्होंने अभी? बहुत सी नई चीज़ें आ रही हैं अभी। फिनिशर्स मस्त मस्त। पानी में जो ग्रेनेड एक फेंका था उसने, एकदम सुपर। एक तो पानी में ग्रेनेड फेंका था और एक कैमरा लगाया था। जो कैमरा लगाया था ना शायद आपका रेनबो 6 में जैसे आप कैमरे लगा सकते हो, उस टाइप का फीचर्स भी ऐड किया है। देखो अभी दिखाएंगे, अभी लगाएगा कैमरा, है ना, देखना। ये उठा के ले जा भी सकते हैं नॉक टीममेट को। क्या आपने देखो अपने Warzone में ये सब फीचर्स रहेंगे या नहीं मोबाइल वर्जन में? ये लगाया कैमरा जो लगा ना, देखो देखते हैं क्या होता है। ब्रो सच बोलूँ मुझे ग्राफिक्स थोड़े कम लग रहे हैं ब्रो। ये वीडियो है अभी, ये तो अभी क्या अर्ली स्टेज में। और Warzone आपका एक्टिविजन का जो गेम है ना, उसमें ग्राफिक्स पे इतना FPS वगैरह पे और ऑप्टिमाइजेशन इस पे ज़्यादा वर्क किया जाता है। और ओपी ग्राफिक्स होंगे। आप आने दो, अभी ग्लोबल आने दो। प्लीज़ भाई वेलकम स्ट्रीम। इंस्टा पे थंबनेल भेज सकते, इंस्टा पे थंबनेल ओके प्लीज़ मैं भेजता हूँ। भेजता हूँ मैं ना यार, इसको तो आ नहीं रहा, डाउनलोड करके ही भेज देता हूँ। तुमको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे। पानी के अंदर भी फाइट होगी यार Warzone में। Pre-order now and get early access to the इस open उनको beta. मैंने व्हाट्सएप की है ना थंबनेल,
And there we go, Call of Duty fans. The trailer's so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited to truly be here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, we have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. Friends. But before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Seeker over the on-air, Jeff Smith, Multiplayer Design Directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level, because there's a lot to get through today, guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much. This game has just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home. The community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. And it's a dialogue that we hope to continue, especially here today. Well, we've got so much in store with this MP experience. And people like Jeff and Joe here, who I am honored to work with, and their experience on this franchise, we're in good hands. Indeed. Okay, so Jeff, well, I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. And let's stay high level for now. There's a lot of details, friends, juicy details. Sure. I mean, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky. What do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? And so we came up with a few methods. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not playstyles. I think a lot of people will say playstyles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels, and these are defensive players that want to just hold down a building, maybe people Overwatch. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field and read where the spawns are. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making, so they're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. 350 Ti 4G और i7 11 पर है आराम से चलेगा तेजाब ब्रो. That you're most excited to talk about. Oh boy, there are a ton of new features to dive into with this game, but we really pushed forward even the most fundamental aspects of what makes the Call of Duty game. It's been really amazing for me to come on board this past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, breaking down the 1v1. And personally for me, water, I've seen the memes, we love water, it's really hard to make in games. But the aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water, I think that level of immersion is really going to speak to fans. वाटर वाला सिस्टम ऐड किया पुराने Warzone में नहीं था वाटर का कोई भी सिस्टम. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, can we go into some details about our water-based adventures in MW2? Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk, we froze the rivers and we made the outskirts just to kill trigger. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, we leaned into water, both visually, beautiful caustics, there's waves with white caps. Warzone में नहीं था, Warzone 2 में ऐड किया इन्होंने. मजा आ गया इससे फाइट लेने में तो. You only can use certain weapons underwater. यार अपना जो Warzone मोबाइल आया था उसमें भी Warzone 2 को ही देना चाहिए आज से में पर ये सारे features. A nice cover or evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water, and as you get deeper, it gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it. Surprise हो जाएगा अगर Warzone 2 वही कभी Warzone आपके मोबाइल में भी आ जाए. Flex on what water could be in Call of Duty, and you saw the welcome on stream. Every piece of equipment, has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge. Really would, instead of blinking out. Update में ऐड कर देंगे. हाँ ब्रो तेजाब आ जाएगा फ्यूचर में आ
आ जाएगा Warzone मोबाइल आएगा उसके बाद फ्यूचर में जो अपडेट आएगा उसमें ये भी दे देंगे वो लोग But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system, Joe? ये क्यों पहन रखे गेम तो Well, खेलना you ही know, नहीं last यार game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, as you saw in the trailer, you can see here on the video, देखो इसमें we have a ग्राफिक्स new लगे leg ना chain ओपी mechanic, एकदम and that's essentially a high mantle. But instead of doing a Story high mode mantle है ये and तो throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive is just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players like rats leaving a ship diving out through the windows. And it's just another option for players in combat. वही तो कहा साई ब्रो वो सब and क्या all अल्फा of these फुटेज की dynamic अभी movements असली mean फुटेज you तो can अब देखने को मिलेगी interact with आपको vehicles specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for एमपी when we भी है get to मस्त अरे Warzone एमपी मॉडर्न 2.0, वॉरफेयर but मस्त it's होने really वाला है exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new items that we can be throwing at each other and equipping and using in all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the dual charge, you saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a car airbag going off it. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS are kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom! It's going to shut down everything. And I can move in, and clear that room. You saw the heartbeat sensor is back. It's got a new look. But it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. This is the tac cam too, which you guys just saw, which to me is my personal favorite. You can put out a lot of them, and you can patch into your teammates, so you can. It gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So it's. I expect to see a lot of fun There's so many, with that today. so many toys and new tools that we're, like, we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my god! कैंपर्स के लिए ओपी है कैंपर्स के लिए सही कहा यार ओपी है बैठ के देखते रहे कोई मारने तो नहीं आ रहा है उसके लिए जो कैंपर्स के लिए आपके पास यूएवी रहने वाला है ना आप यूएवी से पता कर सकते हो Yeah, so the new Gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. We put out some videos yesterday for the Intel drop. I hope people dig into those if you want a better look at Gunsmith 2.0. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross-progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, you know, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. प्लीज इंदौरी भाई पहले ज्वाइन कर लो साथ में बात करते हैं हाँ रुक जा प्लीज मैं करता हूँ ना डाउनलोड करता हूँ I know we all love the gun event for 2019, so it's exciting. This does sound amazing. So we've been hearing a little bit about एक सेकंड करता हूँ ब्रो पहले ज्वाइन करो ग्रुप पे भेज रहा हूँ ओके ब्रो dive into those details though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what. एक काम करना मेरे को लिंक भेजना है ना व्हाट्सएप पे लिंक भेजना मैं इसमें आईपैड में डाउनलोड करता हूँ एक सेकंड एक सेकंड दो बस
and you could make it an SMG, and that was our others really well. And so, you know, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to पीस एक काम करो, टर्निप पे आ जाओ, टर्निप पे देखते हैं हम लोग। वो पैरेलल तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा iOS में। टर्निप है ना, टर्निप पे आ जाते हैं। क्या बोलते हो? For 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more iOS में मिल ही नहीं पा रहा है मेरे को। टर्निप में जो आपका सर्वर है ना पीस, उस पे आ जाते हैं हम लोग। क्या बोलते हो? A lot of diversity in those maps as well. A lot of visual variety, some colorful maps in there, and I think they feel really clean. Guys, you're moving me in ways I didn't imagine to be moved today. Excellent stuff. I might. Hey, it's the first time for everything here on air. We've got some of the maps that we are going to be seeing in MW2. Starting with one, we've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sarif Bay? So Sarif Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious APC, and, you know, swimming, as we've already said. But what you get inside the town is this really intense urban combat, all these tight little alleyways, and all this great rooftop combat, and mixed with our ledge hang, you get these really cool hardcore combat action happening. Yeah, I love how you describe the rooftops there on this map specifically as like a separate ecosystem. You can kind of migrate that entire vertical. You can go up there and just hang out and fight other snipers. All right, well, that looks fantastic, Jeff. Okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. अरे ये कहीं में चले गया, अभी आया नहीं लग रहा है। निर्वाणा का ग्रुप पे डाला हूँ लिंक। ओके वो उसी से आता हूँ मैं। Do you mind giving us some details? And a lot of action right down that center lane. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast. Cannot wait, really cannot wait. एक सेकंड। It looks fantastic. Prisoner Rescue first, Joe. So Prisoner Rescue is an attack and defend mode. It's a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with this. But the way that we give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders are.
And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing like mode once you grab that prisoner and try to get them out. That hero run to the exfil is definitely big S&D energy in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates, and I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun, and I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing that third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details behind this one? We got a little teaser of it on stage from Patro. TPP आ रहा है Warzone क्या कर रहे हैं ये लोग trailer too. समझ में नहीं आया It's been TPP a का pet क्या project for us, right? We've always wanted to do third person, and we're working on all this other stuff. We've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. We have camera work. The camera collision's been reworked. वही तो तेजाज ब्रो फ्लिक्स ब्रो टीपीपी क्यों कर रहे हैं ये camera. You can feel the weapon shake when you're firing with it, and it's just we've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third-person COD feels like in 2022. Sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. Like there's a ton here. I tried to warn you. They're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more. या तो ऐसा होगा लॉबी एक ही रहेगी कुछ मोड में टीपीपी में स्विच कर सकते हैं या फिर शायद स्टोरी मोड में टीपीपी रहेगा केवल स्टोरी मोड में Okay, so what about this third mode? So I'm happy to say that special ops will return as our हो गया डाउनलोड एक सेकंड ज्वाइन करता हूं ब्रो आ रहा वही टीरी पे ऐड नहीं करना वो स्टोरी मोड में लग रहा है मेरे को एक बार खेला हूँ टोरी भाई मजा नहीं आया अच्छा टीपीपी नहीं फोर्टनाइट की बात कर रहा हूँ टोरी भाई आप आके फोर्टनाइट खेलो बोल रहे ये क्या चालू हो गया एक को क्यों छोड़ रहे हो गया भाई सबका स्ट्रीम पे सबका साउंड आ रहा है ना तेजाज ब्रो डिले विले कुछ है क्या इंद्र भाई नहीं PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day one for all who pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a high-level weapon blueprint, playable in multiplayer and Warzone 2.0. Steph, badass. Oni is awesome. I myself am a PlayStation player, and so I will be becoming Oni main day one. It's been awesome to see our narrative team really bring this operator to life, of his backstory, his motives, and I think the art team absolutely crushed it with this game. He is so इंद्र भाई तो फुल टू एक्साइटेड है बीच में स्नाइपिंग मॉन्टाज दिखाए थे वो लोग इंद्र भाई के अंदर आत्मा जाग गई अरे मजा आता है बीआर खेलने में ना मजा आता है मजा आएगा बहुत फुल मजा आएगा first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to. It is immediately around the corner. इसमें 120 120 total players और स्क्वाड में रहेगा स्क्वाड में चार बंदे so make sure you are preloading
Warzone right now. Now, also check out your screens, since here's exactly when you play the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that 24th से open beta for all platforms. The red Team 141 उससे पहले PlayStation PC के लिए है. Cinder weapon vault in the beta, in addition to being able to earn in-game rewards for playing all sorts of cool swag. And don't forget that if you digitally pre-order Modern Warfare 2, you also get up to a week early of campaign access. So we campaign a week early. All right, folks. I hope you enjoy that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you'll see it live and in action in a few short minutes from our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, अगले महीने तक आ जाएगा I think to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. अच्छा Warzone 2 इसके Call of Duty next. Brought to you by Mountain Dew. आईफर ये लोग को तो पूरा अर्ली एक्सेस मिला हुआ है, वो लोगों को मिला हुआ. बॉबी प्लेस दिखा था, बॉबी प्लेस. उसको मिलेगा ही भाई. And Modern Warfare 2. HyperX. Bobby Oxnest. Partner of Call of Duty. Play like a pro on the big screen. बहुत सारे जितने COD के कंटेंट क्रिएटर हैं, फॉरेन and कंटेंट AMD क्रिएटर सारे गए हुए हैं. now on TCL 6 series TVs. Prime भाई इंडिया में कोई PUBG के बाहर निकलता ही नहीं है. today and start claiming your free content. भाई क्या फालतू है. We have 200 creators PUBG हमेशा के लिए बैन हो जाना अभी. अभी वापस अनबैन होने वाला है. First players to play Call of Duty Modern Warfare 2. गेम प्ले दिखाएंगे. आवाज आ रहा है क्या माइक से मेरा? नहीं अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है. There is almost too much. This is like one of those days where I enter and my hopes are so high. And what are you looking forward to most when it comes to Warzone 2? Prisoner rescue. I'm looking forward to using that inflatable soldier decoy to mess a lot of players. इंडिया में जब तक PUBG है तब तक गेमिंग नहीं होगा. सही बात है यार. To prep for alternate of optic because those guys are very old now. So maybe some OG maps coming back. A map that everyone can play. Honestly, give me a broken shotgun. What's your favorite game mode and Mountain Dew flavor combo? Search and destroy code red. Capture the flag, code red. If I'm going hard with the boys on क्या बात है यार. मेरे को लगता है Warzone के साथ मल्टीप्लेयर भी आ जाएगा. उसमें को लग रहा आएगा मल्टीप्लेयर आएगा. सर्च एंड डिस्ट्रॉय भी आएगा. बंद करके ये पूरा नेक्स्ट जनरेशन का मल्टीप्लेयर लेके आ जाएंगे जैसे Warzone आ रहे हैं. COD तो ऑलमोस्ट डेड हो ही गया. COD मोबाइल हाँ. नहीं यार बाहर के इसमें बस इंडिया में डेड होने वाला है. इंडिया में ये Warzone आने के बाद तो काफी पूरी VR Warzone आने के बाद हर जगह डेड हो जाएगा. हाँ ये लोग सोच भी रहे लैंड वैन चलेगा, पता नहीं उसका क्या होगा. ये लोग खुद ही बंद कर देंगे और मतलब नेक्स्ट जनरेशन का जो मल्टीप्लेयर है जैसे Warzone ला रहे वैसे मल्टीप्लेयर भी लेके आ जाएंगे ये लोग. And also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. तो कॉर्डन खेलने वाला कोई नहीं रहेगा. हाँ कॉर्डन को यही लोग बंद कर देंगे. एक्टिविजन वाले ही बंद कर देंगे. थोड़ा टाइम में लगता है. वही Warzone इतना Warzone मोबाइल बना सकते हैं तो मल्टीप्लेयर बनाना तो बहुत आसान है इनके लिए. फिर beautiful, a lot of fun people out there, everyone having a good time, and some incredibly well-dressed people out there, and some definitely not. Sweaty t-shirts abound. But here we go. Welcome back to Call of Duty next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. We got a glimpse of some Warzone 2.0 in the multiplayer reveal trailer earlier today, and it does look awesome. However, we need some true experts to help out. Back at the desk here, we have got Stephanie Stoner, Joe Seagull is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Multiplayer. How are we feeling? We ready to party here? I mean, this is we need to know everything. Warzone 2.0. Stephanie, the world cannot wait. Warzone 2.0. It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at SND IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are going to love it.
real excited about this one. Again, there's a lot खतरनाक in this प्रमोट one, कर रहे हैं Jack. एपेक्स का ऐसा प्रमोट हुआ था क्या नहीं हुआ था नहीं एपेक्स का नहीं हुआ था खतरनाक प्रमोट कर रहे हैं खतरनाक YouTube में बस यही चल रहा है भाई देखो सारे यही लगा के बैठ गए वॉच पार्टी But the centerpiece of all this, of course, is the new map that we've been working on since 2020 with teams across the globe. It brings together our philosophies on map design. It brings together new technologies in order to do it. Lots and lots of artwork to make it happen. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone. And we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map. And we're really looking forward to seeing everybody in there. Well, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait. Stephanie, let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our new map for Warzone 2.0. It is an ये दिखा दिए तुम बोले तो मैप दिखा दिए It is expansive desert अरे फर्क नहीं गया है mix of industrial areas, दिख नहीं रहा towns, a अंदर city, and मुझे नहीं लग रहा अंदर है it looks way better on this screen than it did on ये Twitter. ऑब्जर्वेटरी में रहेगा ऑब्जर्वेटरी रोहन ऑयल Really cool elevation, Al rocky Mazrah peaks, City. caves, subterranean Desert map लग spaces. रहा है This पूरा। map is beautiful, and it's actually the biggest VR map that we've ever made. And I am so excited for all of our streamers here to jump into Al हमारे से बहुत अच्छा नाम देखना उसका Look at the size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of the. रोहन ऑयल क्या है भाई आईफर भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है वो नहीं गया शायद अच्छा ऐसा क्यों है नहीं गया ब्रो नहीं गया वो बस एक्सेस मिल गया होगा उनको हाँ सही है वहीं से खेलेगा शायद तक वो आईफर भी घर में बैठा है सारी लोकेशन दिखा रहे हैं डेजर्ट वाला एरिया रोहन ऑयल ये रहने वाला है हॉट ड्रॉप रहने वाला ऑब्जर्वेटरी देखो ये हॉट ड्रॉप रहने वाला है सारी चीजें ऐड करी उन्होंने डेजर्ट भी बिल्डिंग्स भी कई को चल रहा है पबजी पूरा नेक्स्ट जनरेशन की गेम आ रही है वो पबजी कई को खेल रहे लोग पूरा वो ओल्ड जनरेशन स्लो मोड कौन खेल रहा हो ये फास्ट पेस खेल ना रहे अगर पबजी वापस नहीं आएगी ना 2 साल बाद 1 साल में ही पूरा बदल जाएगा रे पूरा कम्युनिटी बदल जाएगा पूरा और क्या है ना बड़े कंटेंट क्रिएटर अगर सारे यही गेम पे स्विच हो जाए तो अभी 6 महीने में चेंज हो जाएगा सब कुछ वही तो एपेक्स का सीन बहुत अच्छा हो जाता है अगर ये प्रमोट करते ठीक से एपेक्स वाले को ये Warzone अच्छा से हो रहा है प्रमोट This is our first time seeing other people who are not us play. बस रिकॉइल होना चाहिए ज्यादा यार मतलब एपेक्स जैसा नहीं रहना चाहिए पूरा पीसी वाला फील आना चाहिए खेलने में एपेक्स वाले साला कुछ प्रमोट किया ही नहीं They're coming home. Warzone में वैसे भी रिकॉइल इतना है नहीं शायद है ना ओल्ड जो वर्जन है उसमें पीसी में About these flashbacks. रिकॉइल वगैरह इतना ज्यादा नहीं है शायद For some old For Modern that Warfare reason, fans. yeah, I'll say Corey. I think that's gonna. थोड़ा बहुत I think people will land around the edge so they stay in as जो long as गन possible in this match. फायर करता है ना वो वाला एनिमेशन उस टाइप का डालना जो मोबाइल का भी गेम प्ले देखा था ना उसमें तो रिकॉइल काफी लग रहा था हैंडलिंग later on today. Okay, so moving on to the gameplay. We've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. अच्छा टेक्टिकल कैमरा भी रहेगा ऐसे कैंपिंग करके बैठ जाएंगे बंदे चुपचाप कोई हाथ नहीं तो ये भी होने वाला है कि गुलाब कुछ करके एक मैप था अगर मर गए तो गुलाब पे फाइट होगा वो तो रहेगा ये स्विमिंग वाला मैकेनिज्म नहीं था पहले ये ऐड किया ना वो प्रिजन रहता है ना गुलाब मजा आ जाता है भाई वो 1v1 जो भी रहता है जो भी जीतेगा अंदर जाएगा वापस मजा फाइट भी काफी होने वाली है I have no idea, but it sounds great. अलग ही लेवल का है यार देख रिकॉइल देख वो डीआरएच है भाई दिमाग खराब बफर हो रहे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है पूरा रिकॉइल का a little bit earlier. We talked about, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got?
So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them they react to explosive differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will. Will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired. And of course, we've got water vehicles, we've got a small boat, we've got the boat that Joe mentioned with the ऐसे रोहन को भी आट के ये so you लोग can have a little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. I forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? Massive helicopter that you can fly around. It's a big platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Lean out of the window. पीछे कंटेंट क्रिएटर से सेटअप जो सबका सेटअप करके रखा हुआ है। खेलते हैं यार आज Warzone देखते हैं फ्यूचर का गेम होने वाला है शानदार एकदम। ऐसा कोई गेम ही नहीं बना भाई जो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किए जो भी है। सही बात PTSD from भाई साहब वो भी मोबाइल गेम के लिए नाइस। और अभी ये सब के सब खेलने वाले हैं 200 प्लेयर्स एक ही लॉबी में उतरेंगे Warzone 2.0 My head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much has changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? What do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. नहीं guns के साथ अपन मारपीट ही खेलेंगे। Changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them a game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! So it's coming. It will be in Warzone. And there's going to be some amazing clips. Prox chat. But I think Joe can tell us enemies a को मारने little वाले की bit बात more सुन about सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए। उसमें तो मजा आती है सबसे ज्यादा। Streamers love prox chat. They're like, yes! You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we want. इसमें करेंसी होना है वाला है क्या मतलब उसका जो भी है। होगा वो जो ओल्ड वर्जन में था वो चीजें तो रहेगी और कुछ नई चीजें और ऐड करी साथ में। Go inside, go to the medicine cabinet. बहुत सारे नई चीजें ऐड की है। Neospore, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building, and there'll be a medicine cabinet. You can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's just logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there, so you can always have this reliable layer. It sounds really exciting. We go on a road trip through Mazrim, quite literally, like have a route plan. Yeah, pick up snacks, pick up ammo, and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of VR. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. अभी नहीं आ रहा ना? So we've got this आ रहा तो बता दो मैं चेंज कर दूँगा। Split, almost like a cell splits into अरे ये क्या हो रहा है यार? सर्कल देखो। circles. And then those circles kind Circle of split हो जाएंगे। what it does is it Circle split हो जाएंगे कहते हैं। you have these micro battles in those circles, and at a certain point you're like, okay, we've cleared out our circle, we think we're good, and then those circles merge, they come back together. You have this very directed fight of like as the circles gearing up, ये तो पहली बार कर रहे it's about to kick off, and as soon ये as तो those पहली बार circles कर रहे hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel like is a cool world event that would happen. Like all the circle splitting, we need to पूरा do मैप X. भागना ही पड़ेगा रे इधर उधर। बोर हो रहे पीछे कंटेंट क्रिएटर्स बोर हो रहे हैं। बोले बोल रहे कब खिलाएंगे वे लोग हमको। Warzone mobile car is that still around? I mean, there's so much change, man. I mean, I'm ready for it, but Joe, what do we got?
The Gulag. कार्बन आपको लिंक भेज रहा हूँ, अगर आप आना चाह रहे हो तो आ सकते हो, है ना? आपको भेजता हूँ। तेरस भाई मेरी स्ट्रीम पे आया, क्या कर रहे हो? We have running right now. We're setting to play. You're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you guys. कार्बन लो आ जाओ, आपको लिंक सेंड करिए. If you can defeat फ्लॉन्ट्स तो get out. And after कॉल ऑफ ड्यूटी का that, ऑफिशियल ये देख रहा है ना स्ट्रीम? But for that moment, एक और है it's like, इसीलिए ना. all right, we need each other. Let's do नहीं this. मैं Use the proximity chat to देख talk रहा to हूँ. each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag. So you have to be on your toes. Like you're working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. And we're excited for people to try it. And yeah, we're gonna get feedback today too. And like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the मैं मजाक कर रहा था. जिसकी स्ट्रीम देखना है देखो, बस मजाक कर रहा था मैं. न्यू एरा भाई. Jack, I have heard ऐसा जोन सिस्टम अभी तक किसी गेम में नहीं है. 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. So strongholds and reinforced buildings that the AI is occupying inside Al-Mazrah. The players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get बस Warzone मोबाइल में आने दो, फिर देखो मजा आएगा आपको. भाई साहब देख लो स्ट्रीम करने में मजा आएगा. भाई फ्रेंडली फायर ऑन रखना, सबसे पहले फिक्स मार. उसके बाद वर्जिन को मारता. शानदार है यार. Specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it. क्या लग रहा है भाई देखना. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map. Of course, मोबाइल में लोग ग्राफिक्स कम कर देंगे, वो पीसी का दिखाया आई थिंक. काफी कम रहेगा, पर फिर भी जो देखो एपेक्स स्टार्टिंग में अल्फा वर्जन में कितना बेकार लगता था एपेक्स. अभी कितना शानदार है. अच्छा रहेगा. बस ये रहना कि स्मूथ चलना हर डिवाइस में. चलना चाहिए बस. थोड़े ग्राफिक्स भले ही कम रख दो, वैसे ही स्मूथ नॉर्मल में खेलना है अपने को. I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. क्या दिखाने वाले? Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. Correct. I went to the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities of this game mode blow my mind. क्या कर रहे I can also confirm that DMZ. वो लोग बोले वहाँ हमको 10 घंटे पहले बुला के हम बिठाए जब तक नहीं खिलाए. खाना वाने कुछ नहीं दिया अपन को. What I can tell you though is we created a rich sandbox where you can define your own बस पिंग साथ दे दे, छोड़ देंगे. अरे पिंग अच्छा रहेगा. एक्टिविजन मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी में भी पिंग बहुत शानदार आता था. पिंग अच्छा रहेगा. It's played across the whole map. कॉल ऑफ ड्यूटी फोड़ने वाले अपन में सिंगल पिंग में खेलते थे भाई बंदे. अरे क्या बात है. You have to watch out for them. You have to work with your team. Warzone में फोड़ने वाले, हम सब फोड़ने वाले हैं. Occupy strongholds and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt. ऐसा प्रमोशन एपेक्स को करना था, अभी कोई और रहता था फिर एपेक्स. Decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. कुछ नहीं किया एपेक्स, खाली आया. I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter, and we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. Call of Duty वाले बहुत सोच के बनाए, बहुत भाई. In the community, specifically Call of Duty देख ली एपेक्स वालों का. Ricochet, anti-cheat, वायरस आया. ranked play, and beyond. Trust me, although we're touching on some of the Call of Duty क्या खेलने का प्लान बना रहे हो क्या? Warzone 2.0. हाँ, वॉच पार्टी चल रहा है. अरे हाँ वो एपेक्स ये स्ट्रीम्स देख रहे सोच रहे खेलने के लिए. कब आएगा लॉन्च डेट अभी पता चलेगा. नेक्स्ट टॉपिक लॉन्च डेट ही है. बहुत खुश मत हो, iOS के लिए भी नहीं आया है. ज़्यादा खुश मत हो. Warzone 2.0 नहीं आएगा भाई, देखेंगे. गलत हो गया भाई. November 16th. With the start of Season 1 across Modern Warfare 2. Mark your calendars, that's about 2 weeks after November 16th. Modern Warfare 2 launches. Like we had 125 million players in the original Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al-Mazrah. And you will have a chance to see a November 16th वाला chat. Alpha playtest happening right here. कौन सा टूर्नी?
very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We'll see all of you in Al Mazrah on November 16th, but don't go anywhere just yet. खेल के देखना वैसे भी खत्म होने वाला है लास्ट टूर नहीं खेल लो तुम looks like when it's built up from the ground for mobile. लग जाएगा बे 10 दिन 15 दिन से खेले नहीं है सब 15 दिन से एलओसी के बाद से ही नहीं खेला है coming at us with all of our friends प्रैक्टिस करो in every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale, we got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Go too far. Warzone मोबाइल इसके बाद गेम प्ले दिखाएंगे मल्टीप्लेयर का फिर Warzone मोबाइल गेम प्ले आने वाला भाई Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. इलेक्ट्रिक सुपर ट्रक बना दिए बंदे Built for the next generation of gaming. बात कर लो एपेक्स का एडवर्टाइजमेंट देखा था कि नहीं एपेक्स वाले कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ट्विटर पे देखा था Squad up with Sasquatch. Jack Links is good with it. अच्छा कोडम का टूर्नामेंट हो रहा है 20 लाख का क्या बात है एपेक्स वाले मुंह खोल के बैठे होंगे हम क्यों नहीं किए ऐसे अरे ऊपर उसका जो एड भी दिखाया ना ट्विटर अच्छा वही दिखाया तो ट्रेलर जो पहले दिखाया था एपेक्स वाले तो चू जैसा मार्केटिंग किया कुछ भी मार्केटिंग नहीं हुआ उनका वही तो खाली गेम निकाल दिया उसके बाद भूल गए खाली 50 स्क्रीन पर रहे खाली अच्छा ये कैरेक्टर मिलने वाले हैं ना हां कैप्टन प्राइस है क्या ये अलग ही दिख रहा है देखो जो हां गोस्ट कैप्टन प्राइस और दूसरा कौन है वो ये पता नहीं मेरे को आईडिया नहीं इसका अरे क्या ट्रेलर बनाया है कैप्टन प्राइस पूरा यंग दिख रहा है भाई यंग दिख रहा है more players ये एपेक्स वालों के पास सीजन 3 लास्ट चांस है अगर वहाँ भाई अगर ये उसमें कुछ नहीं है भाई साहब देखो एंडरी भाई देख रहे हैं एंडरी भाई एक्टिंग कर रहे हैं एंडरी भाई मजा आ जाएगी मैं खाना खाते खाते देखो भूख लग गई मेरे को ऐसे ही पीछे पड़ जाएंगे चोपर लेके बंदे क्या भाई साहब हवा में उड़ा रहे भाई बंदे इसको देख कैप्टन प्राइस भाई साहब करके मारेंगे बंदे अरे एपेक्स का बंदा है मैं अब भी बोल रहा हूँ बुलेट गोस्ट ये अनचार्टेड का है भाई और मोबाइल का और गजब यार ये ट्रेलर मोबाइल का था क्या What a jam-packed day we've had here so far. अभी दिखाने वाला है And Modern Warfare 2 already ये इसको जानता हूँ मैं ये हर बार कास्ट करती है ना कॉडम वाला जो टूर नहीं चलता है ना वर्ल्ड लीग का यही कास्ट करती है It's me, Beef Mommy, and I Crush couldn't be more है, excited to please be here. crush None other than Chris. अरे लोड़ा क्या बोलते रे That's right. Today we are proud to introduce Call of Duty Warzone Mobile. This is the real thing, and it's on your phone. For the first time ever, you can drop into Call of Duty Warzone from wherever life takes you. Let me quickly point out it's still alpha, so it's only going to get better. And for Warzone fans, recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris. यार अभी धमाकेदार फाइट होने वाली है भाई You know, this is भाई साहब क्या है and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile. मैं शिफ्ट हो रहा हूँ भाई नहीं रहता इधर आवाज आई ना मेरी मोबाइल के हिसाब से ग्राफिक कितने तगड़े हैं तगड़ा है भाई बहुत तगड़ा है मजे आ जाएंगे मॉडिफाई है ये in intimate close quarters combat environments. There's so much variety in Verdansk. एपेक्स भी तो बहुत मॉडिफाइड मैप है for good reason. Teaming with fan favorite locations ये एजीआर है ब्रो गन हाँ एजीआर यहाँ पे सबकी हड्डियाँ खा जाएंगे हम यहाँ पे अपन गन्स खरीदेंगे रिकॉइल है भाई Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay, or you know what? Maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combine to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds
all those essential little touches are smooth and accurate. बहुत मेहनत करे तो It's ऐसा लग about रहा creating an है experience that's so true to form. You can imagine रनिंग एनिमेशन भी अच्छा है रे जब ऐसा दीवार देखने को वॉल जंप करने का मन कर रहा है स्नाइपर वॉल जंप करेगा स्नाइपर का भी अच्छा है स्कोप जो भी है मैस्टिफ है मैस्टिफ अपना That makes it really emotional. कोई डीएम आ रहा It है sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off the finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling strategic, you're complete contracts. Use that cash at buy stations. देखो पूरा अरे ग्राफिक्स देखो यार मोबाइल के हिसाब से अच्छा है ब्रो like bringing back a fallen squad mate. और ये भी अल्फा का ही रिकॉर्ड किया हुआ है इन्होंने That contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. सिस्टम भी रहेगा Like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, फायर ही मार रहा पता नहीं किससे फायर बहुत बुलेट स्प्रेड है ना Yes. Everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big stick of choice like precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either because we have the Gulag. So players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale. Minimum specs 12 GB RAM, Snapdragon 900. For this reason, we're pushing way past the envelope on high player counts to make sure each match is jam-packed with our signature style of combat. So we are supporting up to 120 live players in the single match. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun. बॉट्स ही नहीं है क्या मजा भाई पूरा डिफरेंट भाई पूरा सब देख के ही बनाए ये लोग सब गेम को तोड़ दे रहा है इसके बस ये बता फ्रेंडली फायर ऑन है पीसी फीलिंग अरे ग्राफिक्स ओपी है वो 5 इयर्स बैक मोबाइल पे ऐसे ग्राफिक्स इमेजिन भी नहीं किए थे वही तो सही है ले जा And absolutely it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that in terms of real player count, of course. स्टार्टिंग एफपीपी गेम दिखा दो भाई टीपीपी नहीं चाहिए टीपीपी नहीं दिखाएंगे एफपीपी स्टार्ट करेंगे भी देना ही नहीं चाहिए तब जाके वही तो Because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected पता चला मैच में क्यों 1 घंटा लग गया नहीं लगेगा प्लेयर बेस काफी नहीं मॉडर्न वाला बहुत देर लेता है मतलब that will be in the console and PC version of Warzone 2.0. Exactly. Delivering a खेलने वाले भाई सब experience, it's been a strategic pillar बस पबजी वाले नहीं खेलेंगे Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized कुछ कह नहीं सकते भाई Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone. नहीं यार ये सब स्किल बेस्ड गेम है Wherever you're playing Call of Duty, उसमें एक ही बैग में 3-3 बंदे 4-4 ले लेंगे इसमें कहाँ your friends list and chat are shared across platforms, so you can stay in touch with your friends, whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with PUBG वाले ऑफेंड हो जाएंगे ये बात सुन के weapons and operators that recognized from Modern Warfare 2. वही तो देखा Get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. टाइम पास कर रहे भाई क्या करें खेलने नहीं दे रहे लोग रियल प्लेयर्स I really love to hear that. And as a matter of fact, M16 I saw some of the same weapons and operators being shown earlier today in Call of Duty ये जो अभी गेमप्ले Warzone दिखा रहे हैं ना ये 2.0. ग्राफिक्स तो Are you ओपी है अभी के aiming हिसाब to से make it ऑप्स भी मिलेंगे ना You know, that's a मतलब good क्या क्या question. रहेगा So the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. Hello mic testing 1 2 3 To adapt the best content and features and innovations created across the franchise.
But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. A lot of it comes down to global on सब पे सेम होगा I think फिर हमारे भाई early access का नहीं मालूम global on सब पे सेम रहेगा. And we're avoiding the imbalance that comes with cross-playing between mobile devices and consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping this control feeling है कि गेम स्मूथ होने वाला है most devices में. So whether you're the hardest of hardcore mobile ये लोग बहुत एक्टिव है सुनेंगे भी कम्युनिटी. न्यू इंजन पे काम कर जो. अबे इवेंट देखे दिखा लो कितना एक्टिव है बहुत एक्टिव है लोग अपने सुनेंगे लोग अपने ऑडियंस की बात सुनेंगे. कोडिंग वाले डेवलपर्स फटाफट करते हैं कुछ भी होता है तो. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change. But how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready. I'm super excited to announce right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-register. Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. And now you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends, because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn. एको नहीं हो रहा ना. Vinyls and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. COD PC में भी इतने सालों से ही कम्युनिटी बहुत बड़ा है COD का. हाँ सही है. Launch date वगैरह कुछ नहीं बताया. We are back. It's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but yeah. Where do we even start? I mean, and dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming our way. Ali, I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly. Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, 8 hours a day for years, it feels like it just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles, the boats. I mean, I was like kind of the proximity mine king for a while there. They seem to be trying to blow up and booby traps, and now you're telling me I can do them in not only land but also the sea. ये तो इन्होंने अभी बोल दिया 120 रियल प्लेयर्स और हम बीटा में आ ही नहीं रहे. Seen a lot so far today. Yeah, we've seen what खाना भी खा लिया मैं. And bit of Warzone 2.0. Cannot wait. But guys, it's time to get into business. Let's now get. आवाज आई ना मेरी? This is it. Welcome, ladies and gentlemen, to the Command Center, presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all सबका सेटअप देखो भाई साहब customers. हमको भी दे दो यार. Modern Warfare 2 soon with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com. Recommended setting वाले सारे इनके PC रखे हुए हैं इतने सारे. It's free and it's easy. पूरे मैक्स आउट PC होंगे आए हैं. हाँ वही तो.
every time. Next year, हाँ यार अमन bro, next year है. देखो अभी But first and foremost, guys, before we get into this one, so many streams. बेटा आ सकता है, open beta. बेटा और ये सब खेलते खेलते आ जाएगा, पता नहीं पड़ेगा. जैसे अभी रजिस्ट्रेशन का आ गया ना, वैसे अभी मालूम नहीं पड़ेगा, आ जाएगा गेम. 6v6 gameplay. नेक्स्ट ईयर देखो जनवरी में या मार्च में कब आता है. टाइम तो लगेगा अमन bro, सही कहा. टाइम नहीं दो आराम से उसको उनको अच्छा ऑप्टिमाइज करने दो. ओपन बीटा कब? फ्रेश नहीं है. ओपन बीटा का भी कुछ बताया नहीं. A little bit. We played a tiny bit. I'm getting mocked here. ओपन बीटा का ही बता देते कम से कम. Yes, we got to play a tiny bit yesterday. Yes. Pretty fun. But now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet, coming together here in this crazy top secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get incredibly loud. Yesterday it was Season loud. 4, Season 5, Season 6. Everybody had shown up yet, so now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting it's going to be insane. But we heard Courage from like headphones on. He can be heard from space. Oh yeah, no, 100%. Like Bobby Pop, if he's on a subtrain or something, Lord knows what that's going to sound Ninja like. दिख रहा हूँ ना. My boy Tyler Blevins, Ninja here as well. But like, I think this is a testament to how pumped up everyone gets on Call of Duty. Like the fact that there are this many big name streamers in attendance, we're going to see some incredible gameplay go through the various modes. I mean, this is going to be a real treat. It really is. I mean, you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from all across North America, South America. We've got players all over Europe. वही हाइप रहती है. नई सीजन आता है उसको 10-15 दिन की हाइप रहती है. रैंक पुश हो जाता है फिर उसके बाद मजा नहीं आता. I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, I was talking to them earlier. I was walking around doing the rounds. Everybody. They're going hard, right? Like, I was talking to some of the Warzone guys, repos. He's like, I'm here excited ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the guns, what they come up with, especially our new game modes like Prisoner. It's going to be lit. Listen, as much as they're here for their Call of Duty, they're also here because they want that banger clip. Like, everybody wants, like, you know, you're trying to go out and fry some of these big names, get a clip out on social, your YouTube, whatever it's going to be. So yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their death at their temp. I'm sure we're going to have a couple of those. We'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe this is Hardpoint and Mercado. It's a lot more vibrant than some of the MW games that we've had in the past. There's so many mobile वाला है क्या? especially with Call of Duty, is when it's more vibrant and you can see more on the map. I think sometimes you go dev to dev, yeah, it's like you have like your more realism, like your raise and browse. Some will have a little bit more. In particular, yeah. The second we saw like the fly through of this, I mean, it just looks. अलग से देना चाहिए मल्टीप्लेयर और बीआर भी अलग से देना चाहिए. Not that I had any concerns about the visual side of it because they knock it out of the park every year, but मेरे ख्याल से ये सब नहीं आने वाला. डोमिनेशन वगैरह बस एसएनडी और जो टीडीएम जैसा रहता है वो सब आता है बस. हाय देदरा गेमिंग एक्साइटेड है वॉरज़ोन के लिए. Unreal, man. Yeah, it's unreal. I mean, all these guys are. हम तो भर के वेट कर रहे हैं बस. आ जाए यार गेम जल्दी से. नेक्स्ट ईयर कह दिया. मैं जब भी कोई दीवार देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ वॉल जंप करके मारेंगे बंदे को. इसमें वो रहेंगे वही मैकेनिज्म रहेगी. स्लाइड जंप करके मारो. स्लाइड जंप के लिए वॉल जंप नहीं रहेगा मोस्टली. वॉल जंप नहीं रहेगा. एक से दो बार आप जंप कर सकते हो गन चलाते टाइम. लेकिन फास्ट पेस दिख रहा है एकदम. अरे फास्ट पेस रहेगा. ये जैसे मल्टीप्लेयर चल रहा है ना, वो आपका बीआर भी ऐसे ही गेम प्ले होता है पूरा. हो जाएगा. कॉर्डम तो बंद हो जाएगा ये आने के बाद. कॉर्डम नहीं खेलने वाला कोई ज्यादा वॉरज़ोन आने के बाद. अभी कम हो गए रे बंदे. अभी काफी कम. रैंक में लगते ही नहीं. लेजेंडरी रैंक पे बंदे ही नहीं मिलते. वही सेम टू सेम आते रहते हैं. 360 seconds वेट करो. ये होता है. करेंगे इसकी स्ट्रीम करेंगे हम सब मिलके करेंगे. करेज गेमिंग. I was on, I believe, Nate shot streaming. I don't believe that he's here today, but I was getting disrespectful with some people. करेज गेमिंग है ये. मेरे हिसाब से सीओडी आपका वॉरज़ोन मोबाइल का भी गेम प्ले दिखाना चाहिए यार खेलते हुए. आईफोन खेलेगा लगता है तो थोड़ा समझ में आएगा. आवाज आई ना मेरी? आ रही. हाँ. गैरेज मत खराब हो गया उसको देखो. दिमाग खराब हो गया. गैरेज इतना अच्छा नहीं खेलता. यार डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को क्यों नहीं बुलाया यार? ओहो उस मोबाइल से थोड़ा शाउट को आता है. हां शाउट भी नहीं आया. निंजा
raging passion. Everyone's here on the right side. बुलाए होंगे वो लोग डिस्कस कर जाएंगे कनेक्ट है पीसी से अच्छा बढ़िया बढ़िया दिखाना चाहिए कुछ तो गेम प्ले दिखाना चाहिए अभी डेट तो नहीं बताया बेटा नवंबर 16 को स्टार्ट होगा आई थिंक मेरे को तो ये लगता है अक्टूबर में ही हो जाएगा बीटा स्टार्ट एंड्रॉइड के लिए फिर iOS के लिए फिर ग्लोबल बीटा ये मतलब हाइप डाउन नहीं होने देंगे मतलब कोई भी गेम नहीं रखेंगे ज़्यादा क्या होता है ज़्यादा गेम दे देते पूरी हाइप डाउन हो जाती है लॉन्च शायद नेक्स्ट ईयर जनवरी में हो जाएगा आई थिंक कोडेम का बीटा अल्फा आया था ना वो भी लगातार आया था आया एक मंथ स्किप हुआ तो कई और रीजन में चालू था वो मैप को देखो मैप ग्लिच्ड आउट है पीकिंग वगैरह है भाई पीकिंग है अरे गजब ये आपके उसमें भी रहेगा बीआर में भी रहेगा हां पीक एंड फायर भाई कहां बंदे के मुंह पे घुस गया भाई गाइस नहीं अच्छा नहीं खेलता गाइस मजा आता है एसएनडी खेलने में बहुत कोडे में मजा आती थी स्टार्टिंग अरे फ्रीकी भाई वेलकम स्ट्रीम ये सीरीज जाके पे अरे बोलो भाई वेलकम स्ट्रीम ओपी निकल गया क्या किया इसने वॉल बैंक भी है ना हां वॉल बैंक रहता है ना इसमें तो रहेगा वॉल बैंक क्या है मतलब कुछ ऐसे प्लेसेस रहेंगे जहाँ दीवार के आर पार आप मार सकते हो स्नाइपिंग वगैरह कर सकते हो विंडो पे तो आर पार लग जाती है उसमें विंडो हाँ मस्त बढ़िया है कई बार बंदे तुक्का मारते और लग जाता है शॉट वही तो खेलोगे आप ब्रो वॉरज़ोन मोबाइल तो बहुत खेलने वाले हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं फोड़ने वाले सबके फोड़ने वाले वॉरज़ोन मोबाइल में टफ पड़ा रहे मतलब जब सीओडी खेलते थे ना जब लीक से ऐसा मालूम पड़े थे कि वॉरज़ोन मोबाइल बन रहा है आने वाला है तब से एक्साइटेड हैं हम लोग लीक्स और आज देखो गेम प्ले देखने मिल गया और जब ब्लैकआउट मैप आया था ना ब्लैकआउट कोडे में तब मुझे समझ गया था जब ब्लैकआउट डाल सकते हैं तो वॉरज़ोन का जो नया मैप है वो भी डाल सकते थे और उन्होंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि नया गेम ही बना रहे थे वो नहीं तो वो भी डाल देते हैं क्या इंद्र मोबाइल का नहीं हो रहा है क्या अरे फ्रीकी भाई बस इसके बाद आने वाला है बस दिखाएंगे मोबाइल का पक्का दिखाएंगे वो मुझे नहीं लगता अभी मोबाइल का ट्रेलर देखा कि नहीं आपने गेम प्ले भी दिखा अरे देखो डोर भी आधा खोला पूरा खोला You can jump from ये rooftop कौन to सी गन rooftop, है ये and like पहली you बार can देख रहा jump हूँ further than you think. जो रनिंग एनिमेशन है ना ये बहुत बढ़िया है पता है जो ऊपर रख के हाँ वो बहुत बढ़िया इससे रिकॉल भी नहीं है पता है पीसी में जो है ना वर्जन था जब आया था नया नया हाँ उसमें वो खेला है मैं रिकॉल नहीं होता ब्रो ग्रुप पे है मतलब जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वही लोग जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल लिंक दे दो चैट में अगर कोई आएगा तो रुको बोलो ब्रो मैं लिंक शेयर करता हूं जो भी दो बंद कर दे बोलो बोलते मेरे चैट में भी आते हैं गोलू बोलते मेरी चैट में नहीं आते मेरे चैट में लेकिन आते पूछ के चले कुछ तो पूछते हाय हेलो करके जाते आज गए थे शिक्षा में कोला कर रहे आज मोबाइल इधर देखो अरे ये कर अरे क्या बात है कौन खेल रहा है यार ये तो रेडी हो गया गेम अबे हमें भी दे दो ना ये वो दिखाओ ना यार ये क्या दिखा रहे हो तुम क्या हालचाल कब तक आएगा मतलब ये लग रहा है मतलब कब तक आएगा ये जायरो भी आने वाला है कोई दिक्कत नहीं बस फटाफट आने वाला है नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर गेम लॉन्च होगा कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो Miles, we were talking about this morning. When there's a hard point and there's some elevation above it, you can dive into it, turn around, land on your belly. Godly का खोला गेम प्ले दिखा रहा है वो. There are some movement mechanics for you speed demons out there. कॉपीराइट नहीं लगेगा इससे देख रहे हो? नहीं इसमें तो नहीं लगने वाला है ये तो इवेंट का तो नहीं लगने वाला वॉर्ज़ोन मोबाइल एमपी और बीआर होने वाला है बीआर दूसरे प्लेयर वॉर्ज़ोन मोबाइल खेल रहे हैं देखो दिखाएंगे वॉर्ज़ोन मोबाइल भी दिखा सकते
सकते हैं। The CDL pros were like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters, show us the dive. Gordsley का? Right out the window. Just dive out the window. इवेंट में And all the windows are built कर to be देना गोर्सली का। diveable through. Like that's the way the game is. That's what Joe was मोबाइल वाले अपने वहीं बैठ के खेलेंगे घर में आई थिंक आई फॉर गॉर्सली नहीं ये गोर्सली तो यहाँ आया हुआ होगा इवेंट में शायद स्नाइपर निकाल लिया। That's the so we have the Hurricane. She's running overkill. That's going to be one of the M4 platforms and a sniper on the other side. And we have the mechanic, look. There we go, testing things out. 720p क्यों जा रहा है बार-बार? Fastest way across map. I couldn't. I was trying to see if I could break the slide. No slide well, that works out. Yeah, look at her face. She's just like going around testing out the movement. Some of this runs right in front of her. That works out. चलो गोर्सली भाई का तो देख लेंगे। इसमें अगर दिखाते हैं तो देखते हैं, नहीं तो बाद में भी देख लेंगे उनका तो। हाँ ये देख रहा है ना। ये दिखा रहा है। खेल रहा है। हाँ। इधर मोबाइल में देखते हैं ना अपन। स्क्रीन पे तो यही चलने देते हैं। वेग भी आया है। Way more intense action, of course. There's like evasion stuff. ऑलमोस्ट सभी ट्राइब वाले बंदों को इनवाइट किया है लोग। Excites us. आईफोन क्यों नहीं गया? समझ में नहीं आया। We're here to see people go hard, try to win. Warzone mobile, हाँ Warzone खेल रहा है। Another thing, we're seeing a lot of elevation on some of these maps too. Snipers are going to be loving it. Yeah, I think it's max 2 stories, I believe. I could be completely wrong there, but hit it, hit it. Also, look at that little stop. ठीक है ग्राफिक्स तो ठीक है भी अल्फा के हिसाब से। For a whole beautiful spot I've ever seen. नहीं ग्राफिक्स We're बढ़िया। in the same game too. Yeah, I was in the back. भाई रिकॉइल है। ऐसा ही चाहिए वो। ऐसा ही चाहिए। अभी खेल नहीं रहा गोर्सली। देखा मैंने। Handsome looking. Oh, Dylan's right. Speaking of handsome. Oh, वो also, वेग something we है। haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perk because system. it reminds me of back in the day the specialists when you as you get kills you get more perks. As time goes on, you're gonna have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're gonna get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it, and it's gonna be sweet. Well, the reason Valorant का क्या सीन है? Valorant आएगा या नहीं आएगा? वालों भी टाइम लेगा। मेरे ख्याल से तो साउंड ऑफ कर देना। मैं उसके लिए बहुत वेट कर रहा हूँ। पता नहीं स्ट्राइक सब वेट कर रहे हैं वैलो के लिए भी भाई। जो भी इंडियन ऑडियंस है ना वैलो का सब वेट कर रहे हैं। बहुत वेट कर रहे हैं। सही कहा। अरे मैं बाबा सोच मत क्यों नहीं आ रहा भाई? उसका तो ये बेटा टेस्टिंग चल रहा था फिर भी नहीं आ रहा। एक गॉडली ने डाला था आई गेस उसका भी गेम प्ले। रिलीज हो गया ना उसका गेम प्ले वगैरह। स्क्रीन पे क्यों नहीं दिखा रहा है? मोबाइल का भी थोड़ा बहुत गेम प्ले दिखाना चाहिए पर उसमें क्या इतना एक्शन देखने नहीं मिला ना इस कारण से। But you can also make your own, so you can create it, pick your own 2 perks, your next one, and your ultimate. So you can figure out what you want, and it's just nice having like a rewarding game, especially when you're frying, getting that extra perk. It really does, change what you start off with the base 2. Yeah. You unlock one after over a period of time. You get kills, you get points. The game progresses slowly. इसको मोबाइल दे के बैठा दिए भाई। आईपैड दो इसको। Higher scoring game, you're gonna get more. और कौन खेल रहा है? नोआ भी खेल रहा होगा देखते हैं। And again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail. But the idea that like, the first 2 perks, they're fine. They sort of help out the gameplay. That mid-tier perk. एम असिस्ट का क्या सीन है? एम असिस्ट लेने वाला है क्या इसमें? हाँ मोबाइल में रहेगा। पीसी में नहीं रहेगा मोस्टली मोबाइल और कंसोल में रहेगा। Taking Jeff and Joe's thunder. इंद्र भाई सेटअप देख रहे हैं बहुत हमसे ज़्यादा। I mean, the wagon on that. कभी अपने को भी मौका मिला तो सब कुछ बनाएंगे। Yeah, 2 million views on TikTok, something like that. It's impressive stuff. That's what you're watching in your free time, Clint? Yes, it might be. It might be. Okay. I'm watching him. Brooks TikTok. बफर मत हो यार। ठीक है ग्राफिक्स अभी अल्फा के हिसाब से नोआ भी खेल रहा है। He's very creative. Search and Destroy, Call of Duty Classic here on Fun 18. This looks cool. This is one of the maps that we saw in an Intel drop not too long ago. Ooh, let's go. This is simply spectating Ash Sanders. And of course, we're talking about like 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good hybrid 3-lane map that does really, really well when it comes to a game with like the search and destroy. Like you have your traditional outer lanes, and they have their hidden corners, and they have their ways, and then that middle is just pure ये Apex Warzone सब पीसी में खेलना मोबाइल में इतना मजा नहीं आया। with all the walls and the corners किसी का भी देख सकते हो कार्बन this is probably one of my favorite maps that जोक्स्टा को भी बुलाया क्या? आवाज आई ना मेरी? As you can see, everybody. यार हेलो आवाज आ रही? कोई इधर ही लगाते हैं ना गोर्सली का लगाते हैं। आफ्टर वाइटी स्ट्रीम पे तो साउंड नहीं जा रहा है ना देखना।
दे आर प्रमोटिंग मॉडर्न वॉरफेयर 2। अच्छा, ये इन्होंने भी बंद कर दिया क्या खेलना? देखो स्ट्रीम पे साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, बस बिना साउंड से देखते हैं, बस गेम प्ले देखते हैं। जोक्स्टा भी खेल रहा है, ये नोआ भी खेल रहा है ना? जोक्स्टा, हाँ चलो देखते हैं। अच्छा, लिटिल बिट आ रहा है क्या? अच्छा, वो तो मेरे मोबाइल से आ रहा होगा, अब नहीं आ रहा होगा, अब कुछ भी साउंड नहीं आ रहा होगा, है ना? बिना साउंड के देखते हैं, मालूम पड़ा कॉपीराइट स्ट्राइक सब पड़ गया अगले दिन। आ रहा है, दे आर प्रोमोटिंग मॉडर्न वॉरफेयर 2। नहीं हो रहा है ना क्वालिटी चेंज में, फुल एचडी पे चला रहा हूँ। क्वालिटी तो ठीक है यार, काफ़ी बढ़िया लग रही है स्ट्रीमिंग में भी। ऐसे ही फाइट लेने वाले हैं हम लोग, और ग्राफिक बढ़ाएंगे यार, अभी तो अल्फा ही है। और क्या बात है, अरे बढ़िया। आपका स्कारेल थी ना ये, स्कारेल? हाँ, डीआरएच। अब तो नहीं आ रहा ना कार्बन ब्रो। देखो यही गेम खेलने वाले फ्यूचर में हम लोग सब साथ में। अरे पड़ी ऐसे बिल्डिंगों से पड़ेगी, पता नहीं कहाँ स्नाइपिंग होगी लॉन्ग रेंज, वो देखो सामने से पड़ रही है। गजब यार। आप लोगों को साउंड नहीं सुना सकता हूँ, बाद में आप लोग देखना ये जोक्स्टा की स्ट्रीम, या फिर आप लोग डायरेक्ट जोक्स्टा की स्ट्रीम खोल लो एक तरफ साउंड के लिए। अरे गजब, ओपन बीटा में ग्राफिक इंप्रूव हो जाएगा और भी, अरे बहुत शानदार होने वाला है। जेल ब्रेक, अरे ये क्या है? अरे ये क्या कर लिया इसने? स्नाइपिंग करो यार कोई तो। हाँ यार, ये ऐसे क्यों चल रही है? ओपन बीटा में ग्राफिक इंप्रूव हो जाएंगे। अरे ये गन का तो देखो यार। है रिकॉइल तो काफ़ी है, पूरी मैक खाली कर दी है। स्नाइपर होना था इसका। पुश कर रहे। अच्छा, नोआ भी टीम में, इसी की टीम में। हाँ, अगर ज़्यादा हाई। जेल ब्रेक एक्टिव, ये क्या चीज़ है? हाँ। रिकॉइल लूप। अरे नहीं, थोड़ा बहुत रिकॉइल तो रहेगा फ्री की भाई, थोड़ा बहुत तो रहेगा यार। हाँ, पबजी के कंपैरिजन में तो कम है रिकॉइल। देखो अभी कलरफुल नोआ घुस। ऐसे पुश करना पड़ेगा यार अंदर घुस के। MP5 नहीं, ये तो पड़ी इनको यार। अभी इसमें सारे रियल प्लेयर्स हैं यार बीटा में। ग्राफिक्स नीड टू इम्प्रूव ब्रो, ये तो अल्फा स्टेज, और भी ग्राफिक इम्प्रूव होने वाले हैं गोकू भाई, बहुत ग्राफिक इम्प्रूव होंगे। मेन तो अभी क्या कोर गेम प्ले पे फोकस है इनका, उसके बाद में ग्राफिक तो इनके लिए बहुत आसान बात है इम्प्रूव करना। नहीं होगा, ये डेड नहीं होगा क्या? मल नहीं, पीसी वाला तो क्या है, पीसी में तो हर साल 2 साल में नया गेम आता ही है, तो हर गेम डेड हो ही जाता है एक्टिविजन का। अल्फा या क्लोज बीटा, ये तो शायद अभी अल्फा है, क्लोज अल्फा। हाँ, इंडियन ऑडियंस।
देखो यार मैंने तो क्या कोडेम खेल लिया, वेलोरेंट, मल्टीप्लेयर तो बहुत खेल लिया, बीआर ही खेलेंगे अपन तो जहाँ तक है फ्यूचर में। गुड नाइट भाई, गुड नाइट गोकू ब्रो, गुड नाइट। सही है, अटक गया। यार ये डुओ खेल रहे हैं यार, स्क्वाड में नहीं है, डुओ है। नोआर जोक्स्टा। अरे यार ये बात। देखो अभी अभी भी अर्ली स्टेज में देखो पूरा ग्रीन दिख रहा है। बहुत सारे लोकेशन अभी तक हो सकता है इन्होंने कुछ करा ही नहीं हो उसको। अरे चेंज। आईफर खेल रहा है क्या? अच्छा आईफर गेम प्ले देख रहा है। पैरेलल लिंक ब्रो, ऊपर पैरेलल की लिंक अभी दी है मैंने, देखो आप ऊपर जाके देखो, मैसेज में फिर से दे देता हूँ। रुको रुको एक सेकंड रुको। बोलो ये अब आ जाएगी, वो मेरी दूसरी आईडी से मैंने कर दिया था सेम। मज़ा आएगा यार वॉरज़ोन में, बस आ जाए फटाफट। हाँ इसमें है प्रोन बटन है इसमें, है ना, है। पर एफ पी पी है तो दिक्कत नहीं है यार, एफ पी पी है तो दिक्कत नहीं है, वो टी पी पी ऐड कर दिया तो दिक्कत है फिर। वो क्या ना पीस, इसमें क्या दिक्कत है, बीआर में पूरा डोमिनेट कर जाता है टीपीपी, फिर एफपीपी में लो भी नहीं मिल पाती है, वो दिक्कत है। पर ये एफपीपी बेस्ड होने वाला क्लस्टर स्ट्राइक, क्या ग्रेनेड फेंका, और एक गन देखो क्या चल रही है। अरे गजब। अरे जीत गए क्या ये लोग? क्रैश हो गया, जोक्स्टा का गेम क्रैश हो गया। अरे यार एलगाटो का प्रॉब्लम हो गया यार। गोलू भाई ये क्या लिखा हुआ है? नोवा का खोलते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट इससे आईपैड से करता हूँ डायरेक्ट। एड ओपी। एड ओपी। नहीं फिर से उसको हटा के चालू कर लिया। नहीं नहीं वो सारी गन्स लेके भागते हैं शायद तक इसमें, वॉरज़ोन में क्या बोलते हैं उसको, को हाँ कौन सा रन कुछ तो बोलते हैं उसको यार। हाँ गुलेग में आ जाओ। साइबर फ्रॉक्स वेलकम ऑन स्ट्रीम।
हाँ 1v1 का मोड आया था ना, उसमें था 1v1 2v2 3v3 ATP को मार रहा नोआ। कोडेम का मिथिक जैसा भागता, हाँ वही तो कोडेम में तो वो मिथिक को दिया, इसमें तो एक अलग सा ऑप्शन रहेगा। अरे गजब। तो अनुराग ब्रो एक्साइटेड हो? हाँ नहीं वो भी अच्छा गेम है, एपेक्स भी अच्छा है, वो अलग बात है। कोडेम का मिथिक जैसा अनुराग अरे गजब। नहीं खेलोगे क्या अनुराग? फिर हम ही लोग खेलेंगे स्नाइपर ले। हाँ सही है, कल सबका फेस रिवील हो गया है ना स्ट्रीम पे। अनुराग भाई, अरे निपटा रहा है यार ये तो नोआ तो। अच्छा गोड्सली भी है अच्छे से। 120 प्लेयर्स की रियल लॉबी हुई है। कितने किल्स कर दिए इसने? 11 किल्स कर दिए यार, और 6 बंदे बचे हैं और 3 स्क्वाड। अच्छा 7। देखो पिक का ऑप्शन है पबजी जैसा है ना इसमें। बढ़िया। वो ऊपर ऊपर बंदा, और क्रेक पूरा क्रेक है। रिकॉइल तो है यार। हाँ ये बात भी है। ग्राफिक्स तो टट्टी अब तक ब्रो, अल्फा एकदम क्लोज अल्फा एकदम। जो ट्रेलर में बताया था ना वो, उसमें शानदार ग्राफिक्स थे। ये तो एकदम स्टार्टिंग है। ये तो सब बहुत 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 इजी है इनके लिए। हाँ स्टार्टिंग में एपेक्स का ही देख लो, स्टार्टिंग में कैसा था और अभी कैसा है ग्राफिक्स के मामले में। और ये तो गया हवा में जाएगा। देखो वो खुद बोल रहा है नो रिकॉइल है गन में। गया गया दोनों बंदे। अरे ये क्या कर रहे हैं बंदे, कर क्या रहे? अच्छा जोन में जा रहे हैं सब मरेंगे। वो भी गया। नोआ का गेम प्ले, वो खुद बोल रहा है कि रिकॉइल शानदार है इसमें गन्स में। अरे वो देखो सो हार्ड टू कंट्रोल बोल रहा हूँ। अरे गया, खत्म है नोआ भी। अरे फटाफट लगा शील्ड। रीलोड मार लिया, हिप फायर। अरे गजब अरे जीत गया, क्या बात है यार। ये तो मोबाइल और आईपैड और सब में धुलाई करता है। नोआ का साउंड नहीं आ रहा ब्रो, साउंड बंद करके रखा है, कॉपीराइट वगैरह ना मिल जाए इस कारण से साउंड कम कर दिया है। चलो चलें क्या, उस पे चलते हैं मेन। उस पे क्या दिखा रहे हैं अभी? सब ही देख रहे हैं नोआ और जोगेस्टा का नहीं आएगा कॉपीराइट। अच्छा रुको फिर से देखते हैं, करते हैं, डिलीट कर देंगे वैसे स्ट्रीम देखने के बाद में। और फिर से गेम प्ले करेंगे कि नहीं करेंगे ये लोग? साउंड बढ़ाते हैं अब अगर नया गेम प्ले करते हैं ये लोग। नहीं नहीं करेंगे करेंगे। चलो देखो ये पूरी लॉबी दिखा रहे। हाँ
एक टॉप से एक फ्रंट से है ना कंट्रोल्स। देखो ये बटन्स पूरा होने वाला है और कितने सारे बटन्स हैं यार। हाँ सही है। एपेक्स में रुको कॉर्डम में 4 यूज करता था, इधर एपेक्स में 3 करना पड़ रहा है क्योंकि प्रोन ऊपर था मेरा। अरे साउंड से फर्क नहीं, अगर कॉपीराइट आना होगा तो बस एक छोटा सा वीडियो का क्लिप भी दिखा दो, कॉपीराइट दे सकता है। हे बंदे सही कहा, अभी सही है साउंड, ठीक है ना। ये सब क्रिएटर्स कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारते हैं गेस, मेरे को मतलब नहीं लगता। ये फर्क का भी जो हाइलाइट्स बनाते हैं ना बंदे, उसको नहीं पड़ता। सही है, फर्क को जाना था यार, वो तो मेन क्रिएटर था यार सीओडी का। वही तो, वो क्यों नहीं गया है। भगवान जैसा दिखते भाई लिटरली। हाँ उसके वजह से ही कॉर्डम ग्रो हुआ लिटरली। वो स्टार्टिंग में शानदार वीडियोस बनाता, वो पहले न्यूक मारना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेजेंडरी रैंक पहुंचना बड़ी बात हो जाती थी। हर एक गन हर एक मिली के साथ मारा है ना न्यूक, आज तक कोई मारा ही नहीं है। एचबीआर से 70 प्लस किल्स किए थे ना, बिना मरे 2 न्यूक मारे थे शायद। वही तो वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्रॉसबो से भी मारा था ना वो। ब्रो बोट्स नहीं थे, सारे 120 रियल प्लेयर्स थे, सारे कंटेंट क्रिएटर थे जो अभी खेले ना इस गेम में। और हो सकता है अधिकतर आईपैड प्लेयर्स हो तो उनको मोबाइल में खेलना ही नहीं आ पा रहा हो। वही हाँ, वो भी हाँ। बोट्स नहीं था अनुराग में, कोई भी बोट्स नहीं था। बोट्स नहीं है। This is like a pre-alpha, but it's going to be so fun. I imagine this because I've played many games in their early Good night, Guru. Bye. I'd imagine it's going to be incredible. Just by how हे भाई मैं फोटो देखेंगे डिस्कॉर्ड पे। गोशी ने भी रैंक में डबल न्यूक किया था आइफर के बाद। अच्छा क्या बात है। मुझे तो बहुत जैसे लग रहे थे, नहीं वोट नहीं थे। अभी क्रॉस पो से कोई नहीं किया भाई ऐसे। कहाँ चले गया मेरा सर्वर। इसने माइक तो ऊपर करके रखा है, इसको साउंड ही नहीं आ रहा नोआ का। नहीं आए गुरु भाई, तुम्हारा फोटो नहीं आई। क्या फोटो वोटो कहाँ भेजा रहे हो भाई। जोकस्टा का लगाते हैं, जोकस्टा तो तब से लेआउट ही सेट कर रहा है। बॉबी आया क्या, मतलब गया उधर। बॉबी प्लेस का देखें, लाइव चल रहा है। ऑक्स नेस्ट बॉबी इंस्टा पे जो ग्रुप है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी आऊंगा। डिस्कॉर्ड पे तो नहीं आया। This mic is the one that Jokes and I are speaking through Discord with. Actually, let me do a quick test. फिर अनुराग मुझे तो वोट जैसे लग रहे थे। अनुराग ब्रो वोट नहीं है, वोट नहीं है कोई भी। So this mic is the mic अभी ना सबके पास एक ही स्किन थी ब्रो, इस कारण से ऐसा लग रहा था। सबको एक स्किन दी हुई थी, जैसे अपने कोडेम में नहीं आती जो सबसे फर्स्ट स्किन, सब सारे प्लेयर्स को वही मिलती है, वो सीन था अभी। ऐसी लॉबी आएगी तो पूरी लॉबी चेंज होने वाली है, जो आपकी वॉरजोन में आती है लॉबी। वैसे 120 रियल प्लेयर 0 बोट, सिल्वर का बोट लॉबी सिल्वर। ब्रो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई रैंक सिस्टम ऐसा होने वाला है। कैसे होगा फिर अगर हर रैंक में अगर मेरा एको को नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा। मेरा आवाज आ रहा है ना। आ रहा है। ये लोग फिर वीडियो कॉल बना के डालेंगे। ऐसे इवेंट करना था एपेक्स वालों को भी, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ये एपेक्स वाले क्या करेंगे, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोचे वो लोग, क्या होएगा। अभी सीजन 3 के लिए वेट करेंगे ना, देखेंगे कैसा होगा। तो मजा आएगी सीजन 3 में स्टार्टिंग में, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। हाँ
यहीं पे बैग पैक करेंगे निकलेंगे Alright, that's perfect. I need the open threshold to be just where other people's voices would come in. अभी जब तक कोई ऑप्शन नहीं है खेलने का तब तक तो एपेक्स ही खेलना पड़ेगा। अभी अदर कोई गेम भी नहीं अवेलेबल है। Let me test this live. सिल्वर की बोट लॉबी। चलो ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, मेन लगाते हैं इवेंट रूकी। इसमें रैंकिंग सिस्टम का नहीं रहेगा ये लग रहा है ना ऐसे। हाँ अगर ऐसा होगा तो फिर 120 प्लेयर्स हर लॉबी में हर रैंक में कैसे आएंगे रियल, वही है। देखते हैं क्या होता है। आपको बुलाते तो आगे जाके पता चलेगा। अभी तुम्हें नहीं बुलाया तो मैं नहीं खेलूंगा। चलेंगे अनुराग साथ में वॉरज़ोन आएगा उसके बाद कभी बुलाते हैं लोग। And we're just going to get a bit nerdy, to be honest. You know, we're going to look at it again. I am so excited to talk about it. But maybe I've got to ask you, what do you want to dive into first? We have the two guys that are going to answer a question. Well, first off, by the way, you guys killed it in the opening of the show. Thank you. Know, it started real smooth. I'm sure nerves were going a little bit, but it was awesome to see. But I know we're going to have gameplay that's going to be popping up. We're going to chat through stuff. अलग सिस्टम है, रेंज के साथ कोई अलग सिस्टम है। A lot of significant changes. You guys are always looking to how to kind of tweak the wheel a little bit. Can we chat through kind of the perk change and where your head was at with regards to that? Because it's a big change. It's interesting. Yeah, you know, perks haven't really been touched for a long time. चलो chat, good night. अब नींद आ रही है मेरे by को। nature they're passive. अबे इतनी जल्दी? Most of the time, जा रहा है तू? people just जा रहा है तू? find the three तीन that they बंद like, करके and देखेंगे। that's it. They kind of forget about the I said that earlier. That's me. Yeah. I find a few I like, and like that's my class. Right, there we go. So we chat, just wanted to come up good with a night. system that was a little bit more engaging, and so we grouped them into 3 different categories. You get 2 to start with. नींद आ रही है बहुत। कुछ भी नहीं बोर करा रहे भाई, पता है। कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ वैसे भी सब कुछ देख लिया। डेट बताना था कब तक आ रही गेम आने वाला है। कल सुबह करेंगे क्या ये स्टार्ट? Alright, fuck it. We'll use this one. It's a lot better. Okay. Well then we'll use the headset mic. Then that's fine. साउंड ठीक आ रहा नोवा का। अगर आपको कल लेजिट मेल आया इनविटेशन न्यूयॉर्क का फॉर वॉरज़ोन, क्या करोगे? जो भी है इनविटेशन। अरे कहाँ बुला रहे यार? I was so close to my mic that छुट्टी ले लेंगे, ऑफिस से निकल जाएंगे। but you guys can hear me just fine, right? भाग ऑफिस करके जाएंगे। Yo. अरे लगाओ यार, एक गेम और लगाओ। क्या कर रहे हैं ये लोग? एक गेम तो कम से कम और लगाना चाहिए। पूरा This is my streamer profile, so I'll stop this recording and then start a new one. What's up? Okay. वो गेम प्ले पीछे करके देखते हैं ना यार, जो स्टार्टिंग में उन्होंने खेला था। यहाँ से देखते हैं। अच्छा ये लॉबी थी। ये देखो प्री लॉबी थी। स्टार्ट हो गया क्या? नहीं ये पुराना वही मैच स्टार्टिंग से लगाया मैंने। वो सोप है ना पीछे? कैप्टन प्राइज पोस्ट सोप। Is my microphone? That's what I need to know. The microphone's. Well, people are saying my actual like mic here is kind of garbage. Those people are trolls. देखो अनुराग रो बढ़िया रहने वाला है गेम। Okay, so trying to slide. Dude, the game sound is loud in my ears. By the way, chat, tax sprint is a thing. मैं क्या लिखोगे? मेडिकल लीव तो नहीं। That bot really out here just trying to drop shot. सभी ब्रो वेलकम स्ट्रीम क्या चल? गेम नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च में आएगा। हाँ ब्रो, फरवरी मार्च में आएगा। मार्च में कंफर्म। मेरे सिस्टर के घर से 15 मिनट दूर पर चल रहा है इवेंट। अरे क्या बात है? No shot. This is the actual game. This isn't a pre-game. No, it's a pre-game. It is. It is. I just don't see the countdown. Isn't going to or many of. देखते हैं स्टार्टिंग कैसे होती है। I really gotta dial that. Have you been using? Oh my god, that sniper's. It's so loud in my ears. फ्रीक्स तुम आफ्टर इफेक्ट यूज करते हो क्या? आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो और ब्लेंडर। देखो ना ब्रो एनिमेशन देखो जो। अब माया सीख रहा हो रहा है। ये क्यों? Hey, we're gonna be literally the first. आज इसको मोंटाज देखा ना, ऐसे लगा कि आफ्टर इफेक्ट सही बनाया।
Yeah. ऐसा कुछ सीन नहीं कि आफ्टर इफेक्ट में बनेगा। So वो we प्रीमियर both प्रो भी have बन to सकता है। choose to jump. Where is लगा भाई Superstore? I didn't ऐसा even. क्वालिटी It's ना kind of far. मतलब Hey, go hospital. I lied. Go hospital. It's right below us. Because I guarantee this is where Hawks is gonna force land. Like right. Can I get this ping down? डिस्क्रिप्शन में दिया ना, मैं वीडियो में जाके I देख ले। guarantee Hawks goes there. गेम आने के बाद नहीं एडिट वगैरह देखना तो आप मेन चैनल में जब मेरा प्रीकेट से टाइप पर आ जाएगा। ब्लैकआउट वाला मैप नहीं है, ये आपका जो पीसी में मैप है ना, अच्छा वो वाला। Dude, I almost had a fall damage because my ADS button's right next to my other button. Oh, that's not good. टाइम नहीं होता बनाने को बदले कुछ। अरे पिस्टल। Alright, I got a knock. अनुराग वो पिस्टल रहेगी अगर गन नहीं भी मिली तो। Played up, by the way. You only spawn in with 2. Okay, तुम मोंटाज नहीं डाले अभी? I cannot see. मैं मोंटाज नहीं, मेरे पास क्लिप नहीं होता रे। मैं किसी का डालता हूँ ना, इसलिए मेरे को मोबाइल का क्लिप हो तो ना डालो, मूड नहीं होता। जब क्लिप नहीं होता तो मूड नहीं होता, समझ रहे हैं? Especially with how integrated. वैसे फिक्स तो किल्स नहीं मिलते। is being able अरे मेरे पास है बहुत सारे। just being able to know where people are, give that intel to your team, peek that back down again, गुड क्वालिटी और गुड क्लिप। पिस्टल के साथ ही लैंड होते हैं ना। हाँ ब्रो, पिस्टल मेरे पास पीसी का बहुत सारे क्लिप है, क्लाइंट का पड़ा है, बस इसका नहीं है। a bit of damage in and help out there. So in terms of ledge hang, where did that मोबाइल का come नहीं। from? What was the idea behind it? You know, why पिस्टल is क्यों it मुझे so मुक्का special? चाहिए? मुक्का भी रहेगा अनुराग, मुक्का भी रहेगा। आर्मर प्लेट्स का सीन है ना इसमें, मैं भूल ही गया था। Parachuting in, just missing that ledge, and you're like, nope, that's frustrating. Let's fix that. Well, we've all been there. Like when you've been playing Warzone, like you're trying to like hop and grab it, and you. We're going to be able to. चलो फिर से नया मैच चालू हो गया। Is it possible you bring me another one? नया मैच मौका देखते हैं यार, वो थोड़ा। Potential wise, 3,000 out of 10. It's gonna be wild. Yeah, you gotta learn like how to slide cancel and stuff, and like right now we don't have access to building. अब देखते हैं वाला गेम पूरा देखते हैं, फिर भले ही बंद कर देंगे। बंद नहीं करना। अभी देखना। चलो देखते हैं। Rendering in across the map. And then I still have a little bit of problems with my like joystick. अनुराग देख लो, अभी ये स्टार्टिंग है, फिर जब ग्लोबल होगा। When I'm reloading, if you sprint, इंजर कब दे रहे हो मेरे को, क्लिप वगैरह कब दे रहे हो? रिकॉर्ड करता हूँ, कल रिकॉर्ड करता हूँ दिन में। And same goes with your ADS. If you ऑफिस में? hit your sprint. नहीं ऑफिस से आ जाऊँगा 4 बजे। Currently there's not a 4 setting. से 7 खेल लूँगा 2-3 घंटे, तो उसमें जो भी क्लिप्स निकलती है सेंड करता We're हूँ। here to provide after, so if that makes sense, you know. इसलिए मोबाइल का दिखा रहे मेन इवेंट में, मतलब कुछ चल रहा ही नहीं। नहीं चल रहा ना उधर कुछ भी मेन इवेंट में। देखो अभी स्टेबल है ना, तो ग्राफिक्स फिर भी बढ़िया लग रहे हैं। एक जो कलरफुल होने वाला है गेम, कलरफुल। 115 बंदे भी ज्वाइन करें। एक क्यू नहीं है क्या? हाँ क्यू नहीं। Belated happy engineering day, engineer रोशन कह रहे हैं, क्या बात है? Thank you brother, thank you। Oh, try the recoil, dude. So I have an SMG right now. It's not too bad. Look at this. हो जाएगा AR that I वहाँ had, mad recoil. Next time I go to shoot, I'm gonna put my finger like in the middle or something. I don't know. Yeah, this part of the map loads in kind of laggy. My FPS is not great over here. Okay, there it is. FPS का प्रॉब्लम बता रहा है वो। Oh, JHC. हाँ। I got JHC and then someone killed me. That gun has some crazy recoil. Yeah, okay. My ears are getting blasted. How's game volume in comparison to my my stream, like my mic? I think I got everything equalized pretty well. Let me double check. देखो 119 बंदे हो गए हैं लॉबी में। Dude, the dropping animation and like the frames are really well. Start. And then that they kind of drop a little bit. Alright, let me shoot a gun. मजा तो आने वाली है, ग्लोबल में मजा आएगी इस गेम में। अभी ये लॉबी है ना, स्टार्टिंग लॉबी ऐसे ही मतलब पूरा। हाँ इसमें भी मार सकते बंदे प्रैक्टिस के हिसाब से। स्नैपड्रैगन 865 और अबव होगा तभी स्टेबल 60 FPS देता है। हाँ सही है। और देखो ऑप्टिमाइजेशन कैसा रहता है यार, मतलब अगर आपके पास एपेक्स अच्छे से चल रहा है तो ये गेम भी आराम से चलेगा।
नहीं तो फिर पता नहीं कौन सा प्रोसेसर लाना होगा खेलने के लिए। I'd like to after the event. बस चल जाए। I might be able to. स्टेबल 60 FPS आ जाए मीडियम ग्राफिक्स में। All right, how are my audio levels now? Because gunshots were stupid loud before. ओके स्टार्ट हो I गया। played with them on the wrong track. नोआ का ही देख रहे हो क्या? हाँ नोआ। Yeah, everything's looking good. Sounds fine, both audio, nice. Snapdragon 865. Yeah. Anyway, I appreciate you guys all choosing to watch my stream here today. I know there's a lot of options. Well, there's not. There's like 10, but still. There's co-streamers and other people's perspective from people that are at these events, so. गेम रिलीज होने से पहले लगता है कि भाई एंड्रॉइड क्यों नहीं है। जब हो जाता लगता है iOS क्यों नहीं है। मिनिमम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर चाहिए। अभी तो इसमें पता नहीं इवेंट तो हम लोग देख नहीं रहे, इवेंट में ये सब नहीं बताया इन्होंने। चलो स्टार्ट हो गया। पता चल जाएगा। देखो एनिमेशन स्टार्टिंग एनिमेशन शानदार है। इसने बंद क्यों कर दिया यार? अच्छा ये देखो क्या सीन लग रहा है यार इसमें, जो हाई ग्राफिक्स में शानदार लगेगा है ना। बहुत अच्छा दिख रहा है भाई। किसका देख ले? नोआ का नोआ फ्रॉम वाईटी। वो कितना शानदार लग रहा है, प्लेन वगैरह सब बहुत अच्छा ग्राफिक्स इसमें ही इतना बढ़िया है भाई। हाँ अरे ये बहुत इंक्रीज हो जाएंगे ग्राफिक्स। अभी तो आप देखो ये तो बहुत अर्ली स्टेज है यार। कोर गेम प्ले पूरा पीसी का लेके आ गए ये लोग। हाँ भाई सबके पास M1 नहीं है। अरे हाँ वो बात भी है, पर देखो अब क्या करते हैं। तो अगर इनको भी अगर गेम अच्छे से चलाना हो तो ऑप्टिमाइज तो करेंगे सारे डिवाइसेस के लिए। इतना तो इन्होंने भी सोच के रखा ही होगा। अरे पर अब M1 का क्या करो, एपेक्स तो देखो देखा कि नहीं स्ट्रीम पे FPS ड्रॉप कर जाता है M1 भी। इसका नहीं होगा तो FPS शॉप आई थिंक फिर ऑप्टिमाइज कर रहा है। अच्छा अरे यार लॉन्चर ले लिया स्टार्टिंग में, गन नहीं उठा रहा तो मर जाएगा लग रहा है। किसके ऊपर रेडियस ऊपर मुझे बैठा भाई। लास्ट खड़ी है देखो किसी के उधर। आई मीन लेट ही है। पता चला लास्ट खड़ा हो गया पीछे से। ये वाला एनिमेशन बोला ना, ये वाला बढ़िया था जो भागता है ऐसे। पीसी वाला कितना फास्ट दिख रहा है कंपेयर टू मोबाइल। अरे ये भी हो जाएगा फास्ट जैसा लग रहा है। वो लोग क्या पीसी स्मूथ चलता है बे, फास्ट नहीं। मालूम है 120 FPS 240 FPS। हां 240 तक में खेल रही इस वजह से। और गया सेल्फ गई है क्या इसके पास? अच्छा नहीं है गया डाउन। अरे विष्णु यार ये तो PUBG का है ना, PUBG का यूट्यूबर। वो देखो इसको चिल्ला रहा है। PUBG का यूट्यूबर है बहुत बड़ा। गुलाग आ गया क्या? गुलाग आ गया। अरे यार I don't know, but I need to win the gulag and then get us back in. Otherwise, we have no viewers because we're spectating. Can we throw rocks? Yeah. Oh, we can. Nice. मरने के बाद पीस एक चांस तो फिर रहेगा। मैं मरेगा ही नहीं, तुम चिंता मत करो। मजा आएगी मजा आएगी। मैं सबको गुलाग भेजेगा, मैं कोई गुलाग नहीं भेज सकता। That's pressure, bro. Currently development no और चलो हो गया इसका साथ गुलाग क्वालिटी। अरे क्या बात है। देख एनिमेशन देख बहुत मजा आया। Let's go, bro. Let's go. Yeah, so I'm gonna stay away from Superstore since that's where all the freaks are. टॉप से तो यार मैप क्या ही लगता है। मतलब मैप की सारी लोकेशन से, पर इतना बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, जैसे पीसी का मैप ज़्यादा बड़ा था। सारी लोकेशन पास में है। मैप का साइज थोड़ा कम होगा लग रहा है, लोकेशन सारी वही छोटा ही लग रहा है, इतना भी बड़ा नहीं है उसमें जितना दिखा था। वही ब्लैकआउट के बराबर होगा शायद तक। फिर तो आराम से अगर ब्लैकआउट के बराबर रहा, जो अपने अभी करंटली जो मैप्स उनके बराबर रहा, तो बहुत बढ़िया चलने वाला है गेम। तो वही
50 प्लेयर्स बचे हैं। पता नहीं जब ग्लोबल के टाइम में कितने कितने किल्स के गेम प्ले डलेंगे फिर 30 20। Oh, I'm sorry if I'm talking over you if you hear me in Discord. फेनेक लेके रखी है इसने। Oh, it's the LNG. हाँ फेनेक मिला है। I've not used this one before. एसएलआर टाइप की गन है ना ये कोई। Go into the plane here. Bro, is cash just not available here? God dang. पैसा कमा पैसा। लोड आउट मंगवा पता नहीं How much money do I need? हाँ 5,000? कैश कलेक्ट करेंगे और फिर लोड आउट वगैरह मंगवाएंगे शॉप से। बाय पैसा दे रे बाबा, सिर्फ 150 रुपया चाहिए। इसमें इन गेम कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं। बोली लग जाती है कि इसको मारना इतने पैसे मिलेंगे, वो मैप पे हाईलाइट होता है। सही रहता है। अपने में बोली लग गई मतलब समझ जाओ कोई ढूंढते ढूंढते आ रही है टीम अपने को मारने। और अगर हम लोग जीतते हैं वो फाइट तो हमको कुछ मिलता नहीं। वो इवेंट के हाईलाइट पे एक वीडियो बना दो भाई। ओके तेजाज ब्रो, अभी इन्होंने वो चीज़ नहीं बताई मिनिमम रिक्वायरमेंट। एक तो लॉन्च डेट वगैरह ट्विटर पे वैसे मालूम पड़ जाना चाहिए, क्योंकि मेन इवेंट तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, उसमें पूरा मॉडर्न वॉरफेयर दिखा रहे हैं वो लोग। तुम लोग बोल रहे हैं तुम लोग कर लो एक छोटा मोटा। हाँ इसी कारण से है मोबाइल का हाई क्वालिटी में भी नहीं है ना अभी गेम। हाँ मॉडर्न वॉरफेयर पूरा रेडी है, मल्टीप्लेयर तो पूरा रेडी है। लूट ही नहीं मिल रही भाई को। I gotta like kill the bots to get stuff apparently. I don't like the music that's playing right now what the hell. Oh shoot, there's a guy. मेरे को लग रहा है ऐसे ही फोन ऑन करके सो जाऊंगा मैं। उस टाइम जितना मजा आ रहा था ट्रेलर देखने, अब मजा नहीं आ रहा है। अंदर जो तुम्हारे स्टाइल में जो असेंबल, वो वाला ग्लोबल लॉन्च में असेंबल होंगे। वो इंट्रो में तो लग रहा था भाई बहुत जोश में हो। क्या लगता है फ्लोन? अच्छा है मजा आएगा। ओवरऑल मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा गेम। अभी देखो ये तो बस अल्फा है, बस ये तो बस अल्फा है। अल्फा में इतना अच्छा। हाँ मजा आ गया, फिर से आ गया। अरे गजब उसको मारा बंदे को जिसने मारा था ना पिछली बार। विस्नेटी क्या नाम है उसका यार, पबजी का यूट्यूबर। उसका नॉक कर दिया। की सोने चले गए। भूख लगने लगी मेरे को तो। अरे गया बंदा। ये M13 जैसा है। हाँ M13 ही लग रहा है ना। हाँ बंदा। अरे गजब, दोनों नहीं एक फीट डाउन। रिवाइव मिल गया था उसको शायद। ग्रेनेड यार 1v2 अब गया। अरे यार Bro, his bot teammate revived him. आगे क्यों गया? देखो इसमें किल गेम भी देख सकेंगे हम लोग कैसे। There's no shot. I should have creeped him right away. I thought he had Jade. अबे आज मैंने एक लाइफलाइन को मारा। Oh man. भाई लेकिन डैमेज उसको नहीं पड़ रहा था। पता नहीं क्यों। तेरे ब्रो से इससे नहीं हुआ। नो रेक्स। क्या? No, that's fine. तेरे बुलेट से इससे नहीं हुआ। तीन स्प्रे मारा। हर बार उसका भेस तोड़ रहा था, फिर मारूंगा तो फिर स्टार्टिंग से फिर मतलब नीचे भी मेरा जो डैमेज होता था स्ट्रीप में भी है, देखेगा। पेड़ का भी कुछ ग्लिच आया बोल रहे यार ये लोग तो। उसका ग्लिच आया होगा फिर कुछ यार। वही सोच रहा था डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा है उसको। अच्छा एंड्रॉइड का कुछ iOS है ये। अरे iOS में खेल रहा है ये तो। देखो टेस्ट है प्रोजेक्ट अरोरा गोड्सली का iOS में भी आ जाएगा यार, जल्दी आ जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ सही बोला ना, गॉडली iOS पे खेल रहा है। तो थोड़ा सा पीछे करना, भी लाइव के बाद iOS में खेल रहा है। iOS पे खेल रहा है, देखे ना उधर हम। तो जल्दी आ जाएगा यार। देखो iOS में तो यहाँ पर खेल रहे हैं ये लोग। एंड्रॉइड के बाद टेस्टिंग करके डायरेक्ट iOS के लिए दे देंगे ये लोग। अरे 13 तो बहुत गिर गया बे इंडिया में। क्या गिर गया? 13 आईफोन।
हाँ Warzone अरे Mobile. भाई मेरे को बुरा लग रहा है Activision बहुत Shanghai, भाई Beanox, बहुत Digital बढ़िया। Legends, and अच्छा Solid Snake मोबाइल Studios. मोबाइल का दिखा It's रहे more हैं मेन philosophy. चैनल पे It's been मोबाइल to दिखा रहे mix हैं together really 49 amazing में आ जाएगा Call of पता है Duty console and PC मैं developers वॉच with देख some रहा of the हूँ best सोच रहा हूँ ये developers बंदा in the जॉल business. जम क्यों नहीं कर 'Cause रहा that's what we want, 49 you know, में an कहाँ आ रहा authentic है भाई adrenaline pumping 13 Warzone, but something that is 49 में हाँ ultimately and is 49 made for mobile and makes a 65 है super भाई polished mobile नहीं experience. कौन It's बोला been है so तू much fun देखा नहीं watching शायद all बिग these बिलियन देखा streamers ये today, प्राइस and रिलीज this का game देखा नहीं शायद looks like a really great 49 time. What is 120 the best वही way for स्टार्टिंग our है ना viewers वही at home to 128 वाला guarantee they will be the 49 में आ first to रहा drop in and play Call ज्यादा of से Duty ज्यादा Warzone बढ़कर Mobile? 52 It's a great तक जा question. सकते It's हो a उससे great ऊपर नहीं question. जाए So for us, देखो मेन pre-registration चैनल is लगाओ going to कॉल ऑफ start ड्यूटी today. का We'll उस have पे a दिखा little रहे bit गेम प्ले more on वगैरह that later. We're super, मेन चैनल पे super दिखा रहे excited मोबाइल का for गेम प्ले all अभी मेन Google चैनल Play. पे If you दिखा log इसमें on तो to अच्छी the लगी Google Play क्वालिटी है Store ना right now, बट 13 और you'll be 14 able सेम है to ना और ऑलमोस्ट ये भी बस कैमरा में ना 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 register. If you're on other platforms, please keep an eye out चिपसेट on अलग है the social नहीं नॉ channels. We नहीं have the नहीं social चिपसेट channels में live now, सेम so है follow, चिपसेट comment, सेम है सेम है all that kind of good कुछ नहीं stuff. डाला And अलग we're है coming बस soon on the कैमरा में Apple कुछ App Store इंप्रूवमेंट for है pre-order. और बैटरी बैकअप 1 We आवर have some एक्स्ट्रा चलेगा incredible और words. उसका I want to ये talk about चेंज है those maybe उसका in a few minutes, but वो maybe for क्या now, डिस्प्ले kick और it अलग over, डिस्प्ले check out उसका some ना gameplay. नॉच भी सेम है Oh सेम yeah, नॉच है can't wait to वो go and प्रो वाले वेरिएंट pre-register में for चेंज होता है myself. वो I'm जो just नॉच अनुराग रहता ब्रो है इसमें ना क्वालिटी और But अच्छी लग रही है इनके that मेन चैनल brings पे an end to उसका our नाम क्या है ब्रो coverage of आइलैंड Call कुछ of है ना Duty उसका नाम Warzone पता नहीं Mobile. जो भी है And लेकिन हाँ मैं देख honestly, रहा it's वो been प्रो वाले such an वेरिएंट से आते बॉबी amazing, प्लेस great बॉबी time प्लेस here. But इसीलिए obviously, 13 और before 14 we इतना do ज़्यादा ये end नहीं all है of these, थर्टीन तो we're gonna 49 try में to आ रहा है see कोई what खरीदना है kind तो of खरीद fun लो all मोबाइल these streamers ले लिया भाई दिमाग खराब है कितने में लिया are bringing it 75 up over here because we are taking up on the screen right now. कब लिया I mean, कब this ends with हो us गया just 2 महीने trying अभी तो to introduce अभी the game. ग्राफिक्स But इम्प्रूव obviously, होंगे every one बेटा of जैसा दिख रहे us, ग्राफिक्स we want to see the ये 2 gameplay. महीने में We want to 25 see वोट everything नहीं that's है happening here. And obviously, I am with वही the best person to talk about everything that is happening here बात on नहीं your करना screen भाई right now. मेरे को Oh man. So when I'm भाई looking at this खूब gameplay दिया right अल्फा now, इतना one of the things I अच्छा बीटा और love सॉफ्ट about कैसा होगा Warzone हाँ वही तो is यार the vehicle play. The vehicle play, the movement, and the combat एक्चुअली systems all 70 tied तक आ together. गया 70 I'm तक a आ गया thumb बट उसका player, चार्जर सब वार्जर finger और खेल रहे हैं कनेक्टर myself, so when I वरेक्टर see सब other अलग thumb लेना players in है particular on the vehicles, यहाँ पे दो बंदे आईफोन की बात कर रहे हैं इंटरनेट वाले सब Yeah, I mean, फिंगर I feel like a lot of the players right now, even if you're not on mobile, था you just see this map and you go like, you go तेरा back, बन जा रहा है, back good night. 2020, Good night, and you're just bro. seeing this map बस again. अभी ग्राफिक्स खत्म और ही नहीं बढ़ेंगे It's अभी just अरे और basically बढ़ेगा having a graphics little देख bit रहे of a अरे throwback from उनकी when स्ट्रीमिंग you क्वालिटी used to थोड़ी play कम थी this इसमें तो map, काफी अच्छा and लग you रहा get है to play it here on mobile. And so I feel like it's just so चला exciting जाती to finally see this map जा back रहा हूँ into 50 life. And really, we're just उसकी ready to आवाज play. I बंद know, कर दो yes, उसकी we're in आवाज alpha बंद right कर now, दो but I played the game yesterday. It feels आईफोन amazing. 14 प्रो 100%. I think you मैक्स पे nailed चलेगा it. यार And बहुत I'm आराम से चलेगा really, तरुण really भाई happy with वेलकम where we स्ट्रीम क्या are. हालचाल If we think of the development आवाज आ process, रहा we है typically think about 4 stages, and we're in the second देख stage रहा है right मैं now where we're live to some amount of people in our हाँ alpha, देख रहा हूँ and we're going to be entering a beta shortly. मैं भी यही बोलने वाला था people तो who उसकी are बात interested कर in रहे getting their हैं hands on भाई it, मेरे को yes, ऐसा ही we लग make रहा it है up to रैंक register उसके now. टाइम में सो गया था फोन में Follow गेम ऑन all of the करके मेरे channels को on अभी social. There'll be some great मैं updates सोया there. था वाह And we just have a अरे little मैं bit मैं बोल रहा हूँ आईफोन 14 प्रो मैं मैक्स सोया पे तो था बहुत हाँ आराम ये से चूस चलेगा रहा था फुल मैक्स एफपीएस 90 120 पता है जो वो भी रैंक पुश कर रहे थे सब पूरा रात ये Gunsmith फोन is ऑन looking किया है absolutely गेम चल रहा incredible. है I think वो सो players रहा who are familiar हाँ with मेरा it, आखिरी they're पॉइंट just चाहिए not था going to ट्रेड believe के what we लिए have मैं सो coming गया up with soon. And as you can see over here, we definitely इसके तो have ट्रेड नहीं हुआ streamers that you're very aware सारे of लोग आईफोन्स में already खेल just रहे हैं logging एंड्रॉइड में in, कोई भी नहीं checking खेलता है out
Warzone Mobile. And भाई it तब looks सुबह and उठ के feels देख रहा amazing. As you can see on your गेम चल top रहा है मोबाइल left भाई screen. We देखना were था talking about this आयरन मोड हो गया beforehand, साला right? One चलो of गुड the नाइट भाई UIs that we really love to talk about is दिन है Boneyard, अभी because for me, दिन and my भर experience in खेलते रहेंगे Boneyard, अच्छा it's ऐसा great. It है has so बढ़िया many बढ़िया chests. You definitely can get a बस lot of बस money बात with the कर loot that you drop in. You already know there's a बाय bounty बाय on गुड your head, नाइट most गुड likely. नाइट Me too. Boneyard for me is my favorite. I'm a player. I like Yeah, to this equip is good two lord. things. I was like two Good primaries night. for myself. Shotgun bye. is a must, and I like my कौन लिख shotgun रहा and है my ये पागल sniper. चैट People make fun of me तू for ही it, लिख but रहा that's होगा what और I कौन love. लिखेगा Boneyard allows नहीं me to नहीं do मैं both नहीं those मैं things. आधे I नींद tend में to हूँ like मैं to इसको hide out करने myself के in मूड some में of नहीं those हूँ little अभी airplane PvP shells, स्विच हुआ था wait क्या for unsuspecting people to come PvP in, and बैगन भी नहीं खेलने वाला sometimes मैं I'm lucky and sometimes I'm not. But that's me, Boneyard all the way. The fun thing for me too, गलत we've है been भाई noticing, some people have been PvP noticing, बकवास Bobby करता है talked about this a little bit earlier, is, you know,
being able to go back into some of those points of interest that you like, in particular ones that were former MP maps and previous Call of Duties, it's just one of the things that makes Warzone awesome. I know people were talking earlier like, oh my god, Superstore, Superstore, Superstore. Oh yeah, speaking of Superstore, I mean, I like dropping in there because I feel like I'm going on a shopping spree. Grocery shopping, all the weapons that you need on the ground, they're over there. You know, but the thing is, it's in the center of everything. You're in the middle of everything, so if you want to go and just go away into safety, you're going to have such a hard time because you're worrying about people up top. Airport's right there, Boneyard is right there as well. So I feel like for me, like since we're seeing Boneyard right now, it's kind of like a safe little spot because it's right off to the side, but you still get really good loot as well. Totally, well said. And for me, one of the things I love about Verdansk as a player is there are these mix of different ranges. You have really close quarter, inside combat, things like Superstore. You have some long-distance sniper areas. Some people like to go on top of dam and try to pick off some enemies. And then you have things that are great for AR, you know, that mix of ranges. So it really is kind of like, you know, choose your own adventure. अगर पूरा डाउन हो रहा है तो झाल चले जाता है भाई. Well, talking about gameplay that we have right now, we definitely want to have a little bit of a look into the different streamers that we have. Obviously, you can see here the duo. तो वही तो. क्या हो गया इनकी स्ट्रीम को? लैग हो रहा है क्या? इसका लैग हो रहा है, उनका या उनका हो रहा है शायद. उनका ही हो रहा है. हाँ, मुझे थोड़ा नाच के दिखाओ ना स्ट्रीम. फिर से आ गया क्या गुलाब? नहीं क्या हो रहा है, अपना ही हो रहा है. फिर से आ गया गुलाब. Known in the scene, especially when it comes to mobile and so. इधर ही. हाँ. थोड़ा नाच के दिखाओ ना. क्या मुजरा चल रहा है क्या यहाँ? कितने बार चांस दे दे रहे? क्या हुआ यार? लेट लग रहा है. It's really exciting to finally see these guys enjoy the game. As we've been talking about this for such a long time, and I really asked Bobby, are you going to be here in this event? I saw your invite. I wanted one as well, but obviously I sneaked into the COD Next event and was finally here, finally able to finally, you know, see the alpha. But hey, since we're here. क्या बोलते हो इंद्र? इसका थंबनेल बना के डाल दूं क्या? किसको चाहिए होगा? डाल दो. बहुत सारे लोग लगा लेंगे. The map, and it's like it's exactly what we saw एक वीडियो में डाल दूं क्या? Totally, it's getting to one of the crunch periods. This is my favorite. The circle started to close. Not yet final. हाँ, Photoshop. Actually मैं graphic designer हूँ. वीडियो बस मैं ऐसे ही बना देता हूँ. मैं graphic designer हूँ. Penalty if you get a little bit too aggressive. यार मोबाइल में लेके आ गया. Speaking of being aggressive, it's like we were talking about it. It's really a matter of where you drop because obviously the tier 5 loot zones, the tier 4 loot zones, you'll always have that risk, but obviously the reward is a little bit more high. I mean, especially if you're going to be dropping at the very ends of the map, at the very end sections of it, where you might not have been अपडेट हो जाएगा Warzone आने के बाद. स्टार्ट यूज नहीं करता ब्रो मैं. here is you need to find that middle ground and every player अपडेट हो जाएगा. सब Warzone खेलेंगे. सारे प्लेयर कोई भी नहीं खेलेगा. go and find a way to buy your fallen सारे लोग teammates switch कर who जाएंगे. we talked about it before, or maybe even meet them in the gulag later on. I'm really hoping to see a gulag feature over here. I want to see it. Me too, and looking at the minimap here, there were just quite a few red dots around. Something tells me तो नॉर्मल उसमें सब रहता है, बस तुम्हें डालना रहता है. मैं रश भी यूज किया हूँ थोड़ा बहुत. Already the Fennec, I feel like it's going to be a really good gun. And speaking of, there you go. Gets one. So that's a really good start for him. So armed up. We can see Bobby Blaze. It's just like Bobby Blaze has been such a tremendous name here in the mobile scene, and now he needs to get out because he's going to be in big trouble, especially going out here with no cover whatsoever. I don't know. He's living dangerously. I don't know, Bobby. I'm worried for you, man. Yeah, Bobby and Hawks, they need to find a way to, you know, just get some cover. There you go, finds one, gets the kill. That's going to be really good for them so far. So, again, so far so good, and I'm really looking forward to kind of just talking to the guys later on after this gameplay, right? I feel like they have a lot to say. Me too. Super curious to hear. Also curious to hear how this interaction here ends. I want to go back to one thing you were saying earlier with the loadouts. One of the things for me that I just absolutely love about Warzone is being able to have this little in-game economy and the strategic choices that happen as a result. Sometimes I want to get my own loadout. Sometimes no, I'm all about buying it. New score streak, leveling up, helping my squad that way. There's a really nice element of strategic choice, and it's ones that we know players and Warzone 1.0 absolutely loved.
And you know, in mobile, there's really nothing quite like it. So just can't wait for players to get their hands on that. Oh, most definitely, because I had my hands on it yesterday. I'm not very Warzone 2 good का at भी it. गेमप्ले दिखा देना That's why चाहिए. I'm being a shoutcaster. I'm Warzone just का बना kidding. दे. But really playing the game and playing Warzone in general, it feels as if Warzone का you're thumbnail? playing the same thing on console ठीक है and बनाएंगे PC. क्या बोल रहा है And so इसमें ये that's क्या such a मतलब huge deal, competitive especially since करना you're है या putting it in such a तुम tiny इंदूरी भाई device, के लिए tiny बनाओ but मैं powerful 20 के लिए device, बनाऊंगा and to have the देखेंगे. same thing here. Not only that, it has its unique aspects as well. I think we've already mentioned it before. Mobile, yes, even though you already have it, Warzone is here. It has its unique features. Big time. And when we started making the game, we listed out all these options. We could make something that was totally not connected. It was its own mobile experience, no connective tissue to Call of Duty console or PC. And on the other end of the spectrum, we could do an exact port, something that felt exactly the same experience, same economy. What we decided in the end was, you know, there are different principles that we want to achieve. We want to make sure on the core game, so here, the moment-to-moment gameplay, it feels just as good as Call of Duty console. Because really, realistic लगता है game actually shooter in the world. Realistic लगता है. We just think there's nothing graphics at the same time. For इसमें mobile इतना players, अच्छा है there's भाई certain भाई साहब. customizations that are really important. Sometimes on the event side. ये काम कर रहा है उसमें गेम में ये लेकिन होगा ये ग्रो होगा लेकिन पता नहीं इंडिया का पता नहीं लेकिन हाँ जब ऑफिशियली जो ग्लोबल रिलीज होगा ना ऐसे भाग ही नहीं सकते ओपन में. हम ऐसे ओपन में भाग ही नहीं सकते. भर देंगे बंदे दूसरे. No, from YouTube, getting these kills already, and it's the first time seeing him right now. So, again, where he's at, it's going to be a prime spot because it's not going to be too crowded, as you can see here, but you can also get really good loot. So that is definitely one thing that you want to have. And now for him, for exploiting all of these, I can see the movement is very much like Warzone. I feel like for me that was one of the bigger questions. It's like, what is the movement going to be like? And you can see here, it's good. He's done, and he's already kind of felt the game pretty right to the fact that he can get a lot of these kills. And so, how was it like trying to transform into the movement coming in from Warzone, going in here to Warzone Mobile? भाई वैलोरेंट मैंने बहुत ग्राइंड किया बहुत मतलब बहुत ग्राइंड मेरे को मैं कॉर्डन खेल के बोर हो गया भाई. बहुत खेल लिया. मैं इतना इतना बड़ा प्यार नहीं हूँ. मतलब कॉम्पी का ऐसा सीन था अच्छा वाला. उसके बाद पूरा क्या बोलते हैं ब्रेक ले लिया. उसके बाद कॉम्पी छूट गया. YouTube के हिसाब से तो जो गेम अच्छा चलेगा वो खेलना चाहिए पर अभी PUBG चला पर PUBG खेलने का मन ही नहीं करता 1% मुझे तो Among Us खेलने का मन करता है. We only have a set amount of time, and that brings an end to what we saw when it comes to the gameplay of Call of Duty Warzone Mobile. And it was really fun, really exciting to see all the streamers playing the game, and we still have way more lined up for you. But with that being said, let's bring in Xavier for a special sideline update. Yeah, what's going on? WB Superstar Xavier, aka Austin Creed, here with the only, the man, the legend. मैं तो सभी गेम ट्राई कर रहा हूँ. मैं एक गेम में कभी नहीं रुक सकता भाई. मेरे को कॉम्प ट्राई करना है भाई. कॉम्पी के हिसाब से तो भी आगे जाके एपेक्स चलने वाला है. हाँ वो अलग बात है जिसको कॉम्पी खेलना है. लेकिन मैं भाई एक गेम में भाई इतनी ही रह सकता भाई. मेरा दिमाग खराब होता है. मैं तो BGMI नहीं खेला. PUBG के बाद छोड़ दिया था गेम. मैं PUBG खेला. मेरे को पता चल गया कि भाई मेरे डिवाइस से कुछ नहीं होने वाला पहले. उसके बाद मैं छोड़ दिया. कॉडेम आया. कॉडेम थोड़ा लाइट था ना. अभी कॉर्डन भी छूट गया. छोड़ दिया. मतलब वही मैचिंग होता था भाई. मैच मेकिंग में तो वही बंदे मिलते थे. कितनी बार मारे दूसरे गन से मार. यही चल रहा है. क्या बोले एक दूसरे को न्यूक कर लो. बाहर कंट्री में तो चल रहा है कॉर्डन. हाँ बाहर चल रहा है. एनए से वो मैं जो मेरा जो और गेम्स था वो तो उसका उनका भी रोस्टर है. Nice. Now you're gonna get into some battle royale. अरे अपना जो निर्वाणा का रोस्टर है ना ये अभी का वो वर्ल्ड लीग खेले. Give me Sympho. Give me Symphony's Pidgeotto ass. You know what I mean? I want to take him out because you know he's known as the cheater.
the Warzone kid, and he's my चलो good करे friend of बंद mine, अब so तो I feel कुछ like नहीं it'd be दिखाने वाले legendary शायद तो ये if लोग I was able to just smoke him in the new Modern Warfare 2. ऑफिशियल चैनल में क्या दिखा रहे हैं Warzone, you know? ऑफिशियल में इंटरव्यू चालू हो गया We're going to be watching. एक Let's see if you get in. All right. Appreciate you guys listening. Back to you, Lottie. पागल जैसा हो रहा है एक बंदा और एक बंदा पूछ रहा है भाई मैं अकेला ही देख रहा हूँ तो आपका स्ट्रीम खत्म फिर से जाएगा गुलाब नहीं Warzone 2 का दिखा दे गेम प्ले ये तो टीपीपी दिखा रहे हैं यार टीपीपी भी डाल दिया क्या टीपीपी गेम प्ले डाल दिया ना Inside, how hyped up he is, like, Oh, yeah. I love it. Yeah, I mean, everybody is. I feel the कौन exact कौन same चला way. रहा है Everybody's in यही one देख रहा room था here खुद for का one वीडियो reason. It's to play लॉन्च and be है ना excited लॉन्च about the new game, man. You can hear it, like the passion in here. Everybody's loving it, all the new game modes. And we got one on the screen right now. Like, तुमने ट्यूटोरियल टीपी भी अच्छा लग रहा है इतना बुरा भी नहीं है हाँ नहीं अच्छा लग रहा है पर Just being able to play, seeing your own back as well has ये been वैसा लग रहा है जो भी एक नया गेम कौन सा आ रहा था ट्यूटोरियल वगैरह डाल दिए and when you got used to it as well. तूने नहीं I was दिया like, क्या yeah, I'm frying, and I know you. thumbnail का ट्यूटोरियल I was having an incredible time yesterday. I was on. यार ये फिर Warzone में भी टाइम डाल देंगे ऐसा लगता है नहीं ऐसा डाल दिया तुम्हें पीएनजी मिलेगा मेरे को दोगे तुम पीएनजी But I will say, कौन सा the भी energy in here जो भी compared कैरेक्टर्स to का like a competitive event, कौन it's से just it's कैरेक्टर intense in a totally अरे different जो way. भी It's है intense in the मतलब अभी fact that बैंगलोर का डाला ना everybody ऐसे is पीएनजी just so चाहिए excited and everybody is मेरे just साथ having pure fun and दे दो bliss, भाई loading into a new game, आप भी figuring बना things लेंगे out. थोड़ा Like the energy मेरे is वही just वही on a दिक्कत हो रहा है different पता है मिलता है वही तो सबको दिक्कत है सोचो what I अगर like about this clip is in 3P. मैं इतना बना रहा दिक्कत तो सबको वही है पीएनजी मिल जाएगा तो सब बना लेंगे Yeah, I was worried about how seamless it would भाई be from जाओ like ये going भाई from 3P to aiming in, but it's perfect. Your centering skills on point. If that's how you play the game. ठीक है मैं डालता हूँ You know, right down the middle. You can play like अरे मैं डाला है ना दो पेज का वीडियो डाला है देख देखा एक स्कूटर में बैठा सर एक टेम्पो में बैठा होगा रॉक कंपनी जैसा गेम लग रहा है और लोबा तू डाला है ना देख तू देखा है चैनल पे देखा है नहीं देखा नहीं हाँ ये वाला लोबा का और एक देख थंबनेल में डाला है क्या इसका वो लोबा गिब्बी को पकड़ के हाँ वो वाला नहीं रे तू तू मेरे को कहाँ पे भेज तू इधर लिख तेरा नंबर लिख इधर नीचे really fun to play because your FOV, like, you see everything and like you play and you peek corners like totally different than in your first person mode. PNG सबको मुझे पता है 98,50,000 कोई नहीं देख रहा बस मैं ही देख रहा हूँ वीडियो को More about like your gun when you're in the first person. It's something dope or something different you can do like you actually You get to see what you look like. I think going back to quickly your point there, Ali, about getting used to kind of the zoom in then into the ADS as well. It does take a second to get used to for sure. How would you handle that though? Because I think traditional Call of Duty games, straight up first person. You know, you can snap really quickly, right? Your ADS, you can put perks on to make sure that ADS is as fast as possible. This takes a little bit of time. So you मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में थंबनेल वाला सेक्शन होगा Well, I'll tell you right off the bat, when we first loaded into it yesterday and got a little bit of a taste, I thought it was a bug. Like, I thought you weren't supposed to be able to get ADS. हाँ वो है ना वो देख डाला है जो जिसमें डाला है They're going to be playing tomorrow and this is going to be happening. But that, it was meant to happen. It was such a smooth mechanic. इसमें जो है सबका सामने पेंज I है was pre-aiming quite a bit, but as you got used to it, the hip fire on a lot of these weapons is actually incredibly accurate. So if anything, you're going to find yourself तो hip दिक्कत firing तो a ये lot सबको more than दिक्कत है ये ADSing when you're playing प्रॉब्लम this क्या है game पता है mode. Again, अगर तू मेरा पेंज यूज कर देगा ना मेरे और मेरे को मारेंगे इनका रूल रेगुलेशन कुछ है मतलब जैसा इनका है बहुत सारे मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना मेरा वार किसी को नहीं दे सकता अगर किसी को दे रहा हूँ फुल्ली मतलब जैसे वो क्रेडिट देगा पैसा मतलब चार्ज करेगा सब कुछ मतलब ऑफिशियली होगा ऐसा नहीं अनऑफिशियली कुछ कर सकता है समझ रहे मैं बना के मेरे चैनल में काम कर सकता हूँ वो अलग बात तो उसमें थोड़ी ना होता I'm kind of curious to see Raw what talent things that like in terms of like hanging from ledges from third person and how that kind of works. ऐसा बना रहे हो so much work into the game. Like IW, I see you. You want us to see everything. Yeah, that's kind of what 3P is for. Like Clint, that's a really good point. Like with your operator. या इधर बंद कर दो भाई मैं देख रहा था कितने आराम से बंद कर क्या देख रहे हो कुछ नहीं दिखा रहे हैं इधर टीपी रॉक कंपनी जैसा गेम प्ले लग रहा है रॉक कंपनी का है ना miss that going forward because I like to see if I get this really cool operator I want to
to see it more. But like to your point, शांति से देख रहा था ऐसे करोगे इंद्र डिस्कॉर्ड में बहुत सारे है मेरा पीएनजी वगैरह डालता रहता हूँ मैं डिस्कॉर्ड ज्यादा यूज नहीं करता पता दे दो मेरे को लिंक रुक मैं इधर देखता चलो यार बंद कर क्या क्या इंद्र में देख रहा था इंद्र ऐसे करोगे थोड़ी बस यार बंद करते हो गया कहीं मैं देख रहा था इंद्र ऐसे लिटरली बस सुबह तक देखोगे तुम तो हाँ मैं तो सुबह तक ये चला गया फ्लॉन्स नहीं फ्लॉन्स मैं नींद में हूँ मेरे पास 3D कैरेक्टर है सबका मैं कुछ भी पीएनजी कैसा भी बना सकता कुछ भी बना सकता जो तुम्हारे माइंड में आएगा वो मैं बना सकता जो कैरेक्टर सभी कैरेक्टर का मॉडल है मेरे पास जो कैरेक्टर अभी तक आया नहीं उसका भी मॉडल है मेरे पास भाई सब भेजो सभी स्किन के साथ भेजो अरे वो थोड़ी ना भेज सकता भाई वो सब मतलब मैं टीम में मैं अकेला नहीं हूँ मतलब पता है टीम जो है हमारा एक री करता है एक मॉडलिंग करता है मैं एनिमेशन करता हूँ ग्राफिक्स करता हूँ मतलब 5-6-7 जने टीम में और मैं अकेला काम नहीं कर सकता एक बंदा समझ रहे